Hi everyone. Hi Bhavita. Hi Shikha. Hi Priyanka. Hi Manoj. It's Manjot. Manjot. Yes, sorry. Hi Right. Manjot. Hi Hi. Puneet. Hi Jyoti. Good to see Hello. you all back. Quickly, can we have everyone's cameras turned on? So a quick feedback. Is there something from yesterday's session that all of you learned something new and interesting? Yes, you can use the chat box. Acha, Nikki, I was just wondering if you could get the notes for it in a PDF or something. For this session, ma'am, I think we'll be providing the recordings. But Recording for of no use now. The screen share what sir was showing yesterday, so we couldn't note it down or couldn't even read it. If you can just share that again, so that we can take a snap of it. okay, so I'll ask sir, give us time till today's session, and I'll ask sir, and we can get it done. Okay, fine. Okay. Yes. Thank you. Quickly, guys, I want your responses. It's early, like it's evening, it's just 7, and I feel everyone is drowsy, or are you not energetic? Should we charge you? Okay, Meda has a question, how to choose crystals. Meda, I am not your mentor. Let Sir join and he will be able to guide you better. Quickly, I want everyone's responses. Okay, Puneet has an answer. Crystal will choose you, in fact. Yes, Isha, you will get the recording of yesterday's session as well as today's session also. Hi, I had a request for today's session. Yes. That is that can we please have first the instructor continue with the whole session and take up questions actually towards the end, unlike what happened yesterday, where everybody, was kind of bombarding him with questions in the middle of the session. Yes, that's what we have planned. And yesterday we addressed everyone's questions also at the end. And that's what we have planned. Actually, sir also wanted to know about, your knowledge, the participants' knowledge towards the course. But then, yes, that's a very good point, and we are prepared with that. And that's what we are going to follow today. Thank you. Also, last thing, I think a lot of us did not get added to the WhatsApp group, including me. Like I haven't received the WhatsApp group link. If you could just re-help with that. Yes, I'll do that. I'll just do right away. Thank you. Acha, when is the second course scheduled? This advanced course scheduled? Yes, ma'am. I'll be sharing all the details at the end. First, we'll take up the session. We'll complete the details, and according to the interest of the people, you can just stay with us till the end, and we'll share the details. Okay, fine. You can.
Yes, I'm again sharing the invite. If somebody is unable to join, I'll also drop a number where you can reach out on WhatsApp with the course name, that is Crystal Healing, and I'll share you an invite there as well. Hi, Krishna sir. Welcome to the session. Very good evening. Hi, good evening, guys. I hope everybody can see me and hear me. Yes, responses. Good evening. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, I think we need to start the session with charging them first. Right. So how many of you actually did some, homework? Like I said, catch hold of your family members or anybody in the home. Try some, crystal healing with yourself. I did not catch hold of any family member, but I did use a crystal last night to sleep with because I have major insomnia. So I used leopard light, if I'm pronouncing it rightly, the purple crystal. And my Right. God, the sleep was so good. So I think that helped. So that's a good thing. Yeah, you did the right thing. And बाकी किसी लोगों ने सबने anybody tried to do some research, like something कुछ भी anything exciting you tried, like I'm basically trying to ask the people who are actually very new to any type of crystal, who just joined for the first time, because I saw in the chat in the WhatsApp a lot of people had no idea. They were first timers for any type of crystal. Either someone had just seen any crystal online, या कईयों को ना काफी लोगों को gift मिले हुए थे crystals. Somebody gifted to you, कुछ भी आपको gift दिया, and then that's how you got attracted towards the crystals and wanted to join and know more about them. Yes, it was more Yes, curiosity, to see the crystals and you get attracted to things. So it was majorly attraction, I'll tell you for the it is majorly an attraction towards the crystals. That is what actually happens. Majority of the people that I know got into the crystal healing world or as a crystal user itself. This is how it started for everyone. Mostly for everyone actually. Even for me, I first saw crystals. I think I saw maybe 15 years back. एक TV पे show आता था on some news channel. There was this lady who used to do tarot, and she used to have these small crystals in front of her. So we were young, like probably college end or something like that. Recently started business, and also we were very inquisitive. I used to get very inquisitive. What is she doing with these cards, and what are these small bright crystals? ये पत्थर हैं, ये क्या है? How why she's saying these crystals have these magical powers and all that stuff. So even after that, I never saw these crystals anywhere in the market, anywhere in front of my eyes. But 7-8 years back, when I first saw them, I was like fish in water. Nobody really told me a lot about them. I just saw them at some shops and all, and maybe at exhibitions. I started picking them up. Then I started researching, reading books. Internet पे इतना information नहीं मिलता था. I'm talking about 7-8 years back at least.
So I started doing, research, learning about them, then using them. So a lot of crystals I learned about them by using them. Abhi, even in this course, like this is an introduction class, here I tell you a lot of things about the crystals. You won't remember them. Even if you remember them, they will be not of much of use to you unless until you experience the same in your life. There are many crystals here which I'm going to talk to you about today, जिनका बहुत सारा ऐसा यूज है जो कहीं ऑनलाइन मुझे आज भी नहीं मिलता है. But that property I have seen myself, then I connected with other healers and the people whom I have been giving these crystals to, and I saw that those results are coming. Certain results are very obvious by the color of the crystal or by the properties, but otherwise a lot of properties were not mentioned anywhere, because in the end these are all natural. These are all, nobody has made them. Ye naturally mil rahe hain. These are not gemstones, with which are very defined. Gemstones have a very defined purpose. These are crystals whereby in the crystal world, one thing you must remember, that you, even if you know everything about crystals, you still don't know. There will be an experience every now and then that you will see कि आप rose quartz का example लेते हैं. You are using rose quartz every now and then for love, emotion, for harmony. But at times you will be surprised that you've used rose quartz, or your client has used rose quartz, and he got a lot of abundance. पैसा आया या कुछ ऐसी चीज कोइंसिडेंटली उस टाइम पे हो गई, या उनका रिलेशनशिप उन्होंने वाइफ के लिए लिया था, बट देयर रिलेशनशिप इंक्रीज tremendously with their parents, or a lot of things related, because there's a very simple reason. Because if the crystal wants to give you love and abundance, it could give it to you in any form. This is not like a miracle overnight, but if you're talking about this crystal specifically working on heart chakra, so it could give you that love and emotion and abundance through any means. That could be through an emotion, that could be through money also, or that could be through good health. So we have to be very open. When we talk about crystals, these are beings which can create some magic and some amplification in your life. So if we keep an open heart and an open mind, we'll be surprised that ये अगर सिट्रीन है, ये सिर्फ बिजनेस और हेल्थ के लिए या येलो चक्रा के लिए काम करने के लिए है, बट you will see that it is working on many other fields in life and many other chakras. And why I'm using this word chakras a lot, because when you are using crystals, primarily how are you going to get benefit out of it for yourself, for your clients, for your family members, or for your business or anything, is through the aura and the chakras. Because these are magnifying crystals, so they are magnifying the positive effects and then balancing your aura and balancing your chakras. That is how you're getting that boost of energy. Someone yesterday in the class was telling me that I've been using these crystals and I'm getting a lot of energy, और मेरे को बहुत positivity, activeness लग रही है. So उसने आपका chakras को balance करा, so that's how you've got those energies, and that boost. So today, as I was telling you, we've already given you an overview of the basic crystals. So I'll again start with the images of all the basic core crystals, 7 to 10 core crystals, जो कि आपके लिए हर crystal user के लिए, healer के लिए बहुत जरूरी है. That is a must to know, because those are the core crystals. What I mean by core crystals is what I mean by core crystals is that these crystals are used for everything. Even if you don't have the knowledge of high level crystals, or crystals which are not easily available, or a lot of people don't use them, or they are expensive, these 7 to 8 crystals are more than enough for your complete journey throughout life, for any type of crystal healing or anything you want to do associated with crystals. So let me first show you the pictures of the main crystals that we have already spoken about. And today, the bonus things that I was talking about yesterday as an introduction, I'll be introducing certain crystals which are not really crystals. I like what I mean to say कि वो actually पत्थर नहीं है, वो actually crystal नहीं है. A lot of people don't know them. A lot of people don't know them as a crystal, and they don't use them. But these are actually crystals, and a very simple example of that is rock salt.
हमने रॉक सॉल्ट कहीं ना कहीं अपने किचन में देखा होगा कभी ना कभी. आजकल बहुत ऑर्गेनिक स्टफ का वो आ रहा है, तो सब एवरीबडी नोज व्हाट अ रॉक सॉल्ट is, you know, those are small pink chunks. So rock salt lamps and rock salt slabs, they are used as crystals in crystal therapy. A long time back, I heard that in Gurgaon there was a rock salt room that was developed. You know, those areas where every wall and everything is from rock salt, and you're supposed to be inside, and you know, the heat generate just like a sauna, and you're inhaling those. So when you add these crystals in your life, first of all you get an edge कि कुछ different use कर रहे हो, even as a client base, if you want to use them or on your family members, so this will be a different thing, and this is absolutely organic. You know, a normal crystal also, when you know goes back to the earth, उसको बहुत time लगता है earth में मिलने के लिए, but a rock salt will just melt away. You know, it's salt, you can eat it, you can mix it in water. The other bonus crystal I will be talking about is Rudraksh. Everybody knows Rudraksh क्या है. Rudraksh, you know, it's like a holy plant, or a holy plant का वो बीज है, शिव जी का वो है. मतलब it's, nobody considers it as a gemstone or a crystal, but this is a crystal, and we can be using it in crystal therapy and also crystal water therapy. रुद्राक्ष से आप पानी में भिगोकर भी उसको जो पीते हैं, जो भी नंबर ऑफ फेस का आप रुद्राक्ष यूज करते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलता है. Rudraksh, when using in crystal therapy, is beneficial for taking away pain, taking away emotional stress, depending upon what type of Rudraksh you're using. And if you are not aware of all the faces, then simple पांच मुखी Rudraksh is available anywhere. जो हम लोग गले में पहनते हैं, वो आप कहीं पे भी use कर सकते हैं. Then marble is a crystal. What these type of crystals are very simple and basic, and these are usually told in the advanced classes, but I am, you know, explaining them today so that you have an edge over and understanding over, you know, the others. Because marble as a crystal, I don't think India में, मैं अगर personally मैं जानता हूँ, या जो मेरा research है, 5 से 6 लोग से ऊपर जो मेरे को पता है, they might be more, 5, not more than 5 to 6 people are using marble as a crystal. And why I will give you a very simple example कि why you should be also confident that yes, marble is a crystal. आप मंदिर जाते हैं सब लोग, जितनी मूर्तियां आपको मेजॉरिटी मंदिर में मिलेंगी पैन इंडिया, most of them are marble. Very rare there is any other stone used. It is marble or onyx. और आपने नोटिस करा होगा पुरानी मूर्तियां जो yes, chapatis roll करते हैं, ताजमहल, yes, everybody is right. What kind of marble means? Any marble, the marble on which you are sitting, जो marble आपके घर में लगा हुआ है, Pakistani marble, onyx. Can we use pebbles for healing? Yes, I will be showing you pictures about for the pebbles, and not the pebbles that you found on the road, या वो जो नदी किनारे मिलते हैं वो नहीं. It has to have some property to absorb positivity, or you know, magnify the good energy. So those type of crystals also I'll show you, pebbles and you know all that stuff. जितनी भी पुरानी मूर्तियां होती हैं, आप पुराने मंदिरों से चोरी होती हैं, कहीं से जमीन से निकलती है तो वो लाखों करोड़ों में ऑक्शन होती है, चोरी होके जो इंग्लैंड चली गई हमारे देश से. Otherwise, what is the value of something old? It is just an antique piece of marble. एक मूर्ति बनाई हुई है, उसमें कुछ कौन से भगवान है पता नहीं. Because the older the crystal, the older the stone, it might lose its properties if it is, you know, kept in the open, ज्यादा देर सूरज में है, उसका कलर खराब होगा. बट अगर वो अच्छे कंडीशंस में रखा गया है, खासकर कि एक मंदिर में, या उसके आगे पूजा होती है, मंत्र उच्चारण होते हैं, जस्ट लाइक महामृत्युंजय, और यू नो द हवन्स एंड पूजास दैट वी डू इन द टेंपल. सो दैट marble, that crystal, even if this small, would be one of the most powerful things that you could ever own. You know, the property of that marble or that crystal, the magnification power will increase. आज आप मंदिर जाके बैठते हो और आज आप अपने घर के टेंपल में बैठते हो, जमीन आसमान का फर्क है. What do you feel when you go to a temple rather than you can go to in your house and you know maybe sit, you know, in your journal, or just sit in your bedroom because you are most happiest probably in your house. But at a temple, those energies everybody feels, चाहे आप भगवान में मानो ना मानो, but you feel that there is some energy field, like you when you go to a temple or this holy place,
So that is the property of all of these crystals. So onyx and marble is one of the most widely used crystals in the world, as in a temple, as a deity. But as a healer stone, very few healers even outside India use it, but it is very useful because uska color bada odd hota hai. So you also have to do a lot of hard work with those crystals so that they become that magnifying thing. Temples are form of pyramids. Yes, one of the reasons why temples have this energy, because they are in the form of a pyramid. So the pyramid, there are two properties of pyramid. One, it keeps the energy inside the pyramid and it generates a lot of energy. और जो ऊपर conical बना होता है वो universal energies को attract करता है. So, and it is like a generator shape. A triangle is like in the crystal world, when we are making triangles or we are making certain formations. Ritu, आपने शायद ये ग्रुप में भी पूछा था blue sapphire. See, blue sapphire is not a crystal; it is a gemstone. So here we are not really talking about gemstones. And just to make it very clear for everybody, because I have 97 people here, so I don't want anybody to have any confusion regarding gemstones, especially sapphire. Sapphire कोई भी नहीं पहन सकता. It is one of the most strongest gemstones, which is not recommended easily. पतरी देखने के बाद, बहुत ज़्यादा डिटेल देखने के बाद, Sandeep Gupta, Nikki, if you could add Sandeep to the group. I think he is not added. Sandeep, you can connect with Nikki. So blue sapphire, please कोई भी कभी भी मत पहनिएगा ऐसे, just for trial also, unless you go for your astrological analysis. Even through numerological analysis, it is not a sure shot thing to wear it. So it is not a crystal. So that is why we are not talking about it in this class. Sorry. So another crystal, which if you guys could just nod or chat, write in the chat box if you would have ever thought that this is a crystal or not, or this could have been used as a crystal. The crystal that I am talking about is wood, लकड़ी. जिस लकड़ी के बेड पे हम सोते हैं, जिस लकड़ी का कीचेन यूज करते हैं, लकड़ी का टेबल, right? So never, no. Yeah, Gitanjali, that's a different thing. Remedy is a different thing, but right now, considering wood as a crystal, whenever I talk about wood as a crystal, people get zapped and a lot of people get confused. When I'm doing a live class with people in front of me, so everybody can still speak, right? So I get very confused reactions because wood crystal किसी को नहीं समझ में आता, but let me explain why it is a crystal. आपने सुना होगा वुड के अलावा एक और चीज है जो कि एक एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है, that is cotton, which is, मतलब these are very less known facts. आपने सुना होगा अगर कोई बीमार होता है आपके घर में, या somebody who passes away, somebody who is old in your house, what is the first thing we tend to do? जी वो उनका गद्दे को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उनके बेड को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, किसी को दान में दे दीजिए, राइट? सो द रीजन इज वुड इज अ क्रिस्टल which absorbs all the negative energies. बाकी सारे क्रिस्टल जितनों की आज तक मैंने बात करी आपसे, वो नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और पॉजिटिव एनर्जी को इनहैंस करता है. वुड एब्सॉर्ब करता है नेगेटिव एनर्जी को. वुड के आसपास आप जो भी चीज करोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो उसके मेमोरी, बॉडी मेमोरी में, उसके वुड के ग्रेन्स में, इट इज काइंड ऑफ, इट गेट्स एब्सॉर्ब. सो दैट इज द रीजन वी से कि ये पुराना बेड हो गया है, अब इसको कितना मेंटेन करें, ये पुराना टेबल हो गया है, लेट्स फिनिश इट ऑफ, इट्स अ वेरी ओल्ड लकड़ी. कोई एक्सपायर हो गया घर में तो हमें वो टेबल, हमें वो कुर्सी देनी है वापस, किसी को दान देनी है, things like that. So this is one of the reasons. So this is a very you can say a trick or an additional crystals that I'm telling you, which people are not aware of even today, even outside India, because I am in a lot of groups and I meet a lot of healers outside India.
So this is a very surprising fact for even healers who've been in this field for a very long time. So this knowledge gives you an edge to use it in your house or as a healing person or something. तो wood को हम लोग healing में use कैसे कर सकते हैं कि we can use wood to remove trauma, to remove pains, to remove anything which has been stuck with a person for a very very long time. आप बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, उनकी 15 क्लास हो गई, आपने खुद अपने ऊपर रोज रख करके क्रिस्टल यूज करा है, बट this is how one of the usage of wood is. So you can take natural raw wood, preferably non-polished, and use it. Then there is another crystal called petrified wood. इसका आई थिंक कुछ लोगों ने सुना हुआ है, बिकॉज मैंने ग्रुप में भी देखा कि somebody had posted a picture and I think 1 or 2 people out of you all have petrified wood. पेट्रीफाइड वुड क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा है, जिंदगी सालों सालों से, जन्मों से नेचर में पड़ा हुआ है, जमीन के अंदर घुस गया या उसके ऊपर अलग अलग मिनरल्स अटैच होते गए, अटैच हो गए, तो वो एक फॉसिल बन जाता है. सो दैट इज लाइक पेट्रीफाइड वुड. दैट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फॉर ग्राउंडिंग, a very strong crystal for removing fears and pains and anxiety or stuck memories or any stuck issues with the person. So these 3-4 crystals that I have told you, including wood, they give you a different edge than what everybody is doing in the world. सब लोग बाकी सारे क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, 7 से 10 बेसिक क्रिस्टल तो यूज कर ही रहे हैं. For Palo Santo, Juhi, we will not be talking about in this class because this is the basic introduction class for basic crystals. Here, out of 102 people, I'm considering 80 or 90 people have no idea about crystals, or they just have a few crystals, so they are not aware. So right now, going on to the level of these crystals like Palo and other heavy duty crystals, they will not be able to understand. So yeah, it is used for smudging. So I'm just trying to make you understand कि अभी हम उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम basic core crystals की बात कर रहे हैं, right? So this is one thing about what I've told you about different crystals. So if you keep these things in mind and you start collecting these crystals, you'll have an edge over everyone else. There are certain bonus usages of crystals. आपने अब क्रिस्टल, आपको सबको पता लग गया कल के बाद कि क्रिस्टल कैसे यूज करते हैं. हाथ में पहन लिया, घर में रख लिया, बेडरूम में रख लिया, किचन में रख लिया. आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, आपके पास गिफ्ट आ गया, राइट? अब उसके बाद नेक्स्ट हीलिंग, नेक्स्ट उसको यूसेज का प्रोसेस क्या होता है कि आप फिजिकली उसको कैसे यूज कर रहे हैं किसी और के ऊपर या अपने ऊपर. आपको मैंने कल बताया था, इफ यू आर हैविंग अ हेडेक, तो आप शायद रात को सर पे एमेथिस्ट रख लीजिए यहाँ पर, या कोई क्रिस्टल आपके पास है. सो just be quiet and just relax and try to release, so you will feel some calmness, so that is the normal way कि हम क्रिस्टल को अपने बेडरूम में रख लेंगे, किचन में रख लेंगे, जेब में रख लेंगे, and we'll use it accordingly, right? So certain other usages of crystals which are very helpful for yourself and for people you are healing, especially अब आज के दिन में जब सब लोग आपको physically नहीं मिल सकते, somebody you want to heal or somebody wants to get healed or he wants to use crystals. So one of the uses is crystal bath. Now what I mean by crystal bath is like you're taking bath, आप कोई भी क्रिस्टल अपने पानी की बाल्टी में डाल सकते हैं. You certain crystals, मेरे पास पहले प्लेट्स होती थी, अभी नहीं है ऐसी वाली, जिनमें there are minute holes and they can be actually stuck onto the shower head. So the water is coming through this. So you're getting those healing energies from the crystals while taking a bath. Then other ways are कि आप, if you're taking bath in a tub, you can just fill up your bathtub with crystals and उसका energy आपको पानी के through आएगा because you're taking a bath with it. Crystal salts आते हैं, which means rock salt होगा. Those are chunks of rock salt and उसमें इन crystals का powder या aroma oil साथ में मिलाए जाते हैं. So that is a very good way for detoxifying somebody whom you're healing, और आप खुद हैं, आप बहुत थके हुए हैं, you were not well, you were sick, you played a lot, you are tired, you have fever. आप crystal salt से अगर नहाएं and rock salt powder. Sea salt is also one of them, rock salt powder. Rock salt powder, I take bath with rock salt powder almost every day.
like I mix it in the bucket or even in the mug, you know, with which you're taking bath. If you, a lot of people take the bath with shower, तो उसमें कहाँ मिलाओगे? तो मग में आपने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाला, and you just, you know, in the end you have taken a, you know, dip with it. So that is very useful. So these are additional things which are beyond normal use of crystals. How to, you know, get them in your aura, because आप क्रिस्टल को अपनी पूरी बॉडी से तो नहीं टच कर सकते, तो आप रॉक सॉल्ट को टच कर सकते हो, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल को, क्रिस्टल के जो पीसेज हैं उनको पानी में डाल के उनसे नहा सकते हो. Then crystal elixir and crystal water. Now you are doing crystal therapy from outside. आप अपने पूरा चक्रास को क्लेंस कर रहे हो क्रिस्टल से. आपने क्रिस्टल पकड़ लिया, आपने क्रिस्टल पहन लिया, आपने क्रिस्टल से नहा लिया. But what about the inside of your body? Inside, is there some problem? Maybe your stomach is not well, you know, it's upset. अब वो अंदर से आपको परेशान दे रहा है, आपको food poisoning है. So here comes the crystal elixir or crystal water. What that means is, now this is very tricky. So I don't want anybody to try this unless until you are a very well versed with crystals. आज ग्रुप में चैट में ये बात हो रही थी कि क्रिस्टल में कुछ पानी है, पानी कुछ क्रिस्टल्स है जो पानी के साथ फ्रेंडली नहीं है, which is true. जैसे सेलेनाइट है, इसको आप पानी में ज्यादा देर रखोगे तो ये गल सकता है. ये वाला पॉलिश्ड है, इतना नहीं प्रॉब्लम होगा, बट इट विल, you know, start deteriorating. So it will go inside you. We don't want that. It's not safe. Black tourmaline is a crystal जो पानी में ज्यादा देर रहने से वो भी झड़ता है, गलता है, वो भी we don't want that. You see these shiny parts in black tourmaline? तो ये आपके अंदर नहीं जाना चाहिए. This is silica, mica, you know, all other type of crystals. But still you can make water out of it. I will, that is again, you know, a part of the other classes that I can tell you in. But हाँ, इसका पानी बना के आप नहा सकते हैं और ज्यादा देर रखकर भी. But हाँ, इसको पीने से, black tourmaline का पर्पस क्या है पानी पीने का इसका? If somebody has a very very bad stomach, that person is vomiting, and then a lot of people come to me and say, यार हमारे पर कोई black magic है, मेरे ऊपर कोई हेक्स है, मेरे को पता है इसने करा है, या you know, some type of evil eye or whatever. So then this water is recommended, but that is, there is a process. You have to be very careful with these type of crystals. मेरे बेड साइड पे एक बॉडी की बॉटल पड़ी हुई है शीशे की, जिसमें कि ये क्रिस्टल्स उसमें डाले हुए परमानेंट. अभी मैं उसका पानी नहीं पी रहा हूँ क्योंकि वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है. बट व्हाई आई हैव केप्ट इट ऑन माय बेड साइड इज कि इफ एनी नेगेटिव एनर्जी कम्स, एनी, you know, negativity comes to me, वो इस पानी के ऑरा से, ब्लैक टॉर्मलिन के ऑरा से नलिफाई हो जाए. Because one more thing which I just remembered, which was not even in the bonus curriculum today, one more element or one more product is like a crystal, and this is also a very surprising fact, and people don't, nobody, probably a lot of people don't know about it. Water, पानी जो हम लोग रोज पीते हैं. I want to have a sip of water also, I'll tell you. So this is a crystal for you. This water is crystal. Why? Water has a memory. पानी में आप जो बोलोगे वो instantly memory पानी के अंदर जम गई, वो निकल नहीं सकती. You know, that's why when we are cooking or when we are drinking water or when somebody gives us anything to eat or drink, तो उसका जो दिमाग में एनर्जी चल रही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आ जाती है. कई दफा खाना बहुत सिंपल बनता है, बट अगर मदर ने बहुत प्यार से बनाया है, और योर गर्लफ्रेंड और वाइफ और व्हाटएवर, सो यू नो, you say that there is something different about this food. You know, a lot of people I visit a lot of friends, so you know, before the lockdown, so मैं उनके घर जा गया तो उनकी मदर ने खाना खिलाया, and I'm sorry to say this कि वो खाना, that sabji was not at all tasty, but the children who are having it, जिनकी mother ने बनाया, it is the most tastiest food for them, because that attachment, that love is in the food, how that mother has made it, you know, keeping in mind कि मैं अपने husband और बच्चों को खिला रही हूँ. So water is one of the forms of liquid crystal. अगर आपके पास कोई क्रिस्टल नहीं है, आप कहीं आउट ऑफ अपने स्टेशन हो, या आप किसी को जानते हो जो प्रॉब्लम में है, बीमार में है, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई ये पानी का ग्लास लीजिए, रखिए
और बोलिए my fever is down, my fever is down, I am healthy, I am happy, or I love, people love me, you know, I am getting promotion or something like that. पुनीत जी, एलिक्सर बनाना इज नॉट इजी, इट्स नॉट सेफ, सो वो एडवांस क्लास का पार्ट है. एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू ट्राई मेकिंग एनी एलिक्सर देमसेल्फ. प्लीज डोंट डू इट. इट इज रिस्की, पेट खराब हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, एंड आई एम जस्ट नॉट रिकमेंडिंग इट. आई हैव जस्ट टोल्ड यू to know that you know what all is possible. Water is therapy is the one of the easiest and the best, and every day I am charging water for a lot of people who are, you know, attached to me, who are taking energy healing sessions or crystal healing or other type of sessions with me. People who have been not well for a long time, they send me a picture of their glass bottle. glass में ज्यादा वर्क करता है, प्लास्टिक और स्टील में नहीं इतना वर्क करेगा. तो वो मुझे रोज अपने सुबह एक पानी की शीशे की बोतल की फोटो भेजते हैं, तो मैं उसको चार्ज करता हूँ, उनका जो भी पर्पस होता है उस पर्पस के लिए. सो वाटर इज द बेस्ट वन. So just give me a second, let me have a sip of water. And you all would have noticed कि पानी पीते ही you all feel fresh. कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितना सा पानी पियो, you feel that freshness, you know. किसी को गर्म पानी से आती है, किसी को ठंडे से आती है, किसी को रूम टेम्परेचर से आती है. So why I am telling you these points, that काफी ऐसे points हैं हमारे पास जो हमारे लिए फ्री है और उसका फर्क जमीन आसमान का पड़ेगा. यू विल बी सरप्राइज अगर आपके घर में कोई थोड़ा अनवेल है या थोड़ा ऑड फील कर रहा है, गुस्से में कोई होता है, तो आप उसको पानी का गिलास देते हो, और आप अगर उसको प्रोग्राम करके दोगे ना, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है. यू विल सी द डिफरेंस, ही विल फील द डिफरेंस. संचिता जी, यू नीड टू चार्ज इट. यू नीड टू चार्ज योर वाटर. या सो where was I was telling you about the water. Crystal aroma oil therapy. So again, something which is different, which gives you an edge over the normal crystal therapy, or just the same old techniques of, you know, using the same crystals in your hand, on your body, or in your pocket. There is a thing called crystal aroma oil therapy. Aroma oil सबने देखे, use करे होंगे घर में. Aroma lamps देखा है. Now taking it to the next level is crystal aroma oil therapy. What that means is that when you are burning a अरोमा ऑयल इन अरोमा लैम्प, आप उसमें छोटे पीसेस क्रिस्टल के डाल सकते हैं. सो दैट प्रॉपर्टी, दैट मैग्नीफाइंग एनर्जी, दैट यू नो एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल्स कम्स इनटू इट, एंड वो खराब तो होगा नहीं, उड़ेगा तो नहीं, जब तक कि आपने सेलेनाइट नहीं डाला है या ब्लैक टॉर्मेलिन नहीं डाला है. अदरवाइज जो नॉर्मल कोर क्रिस्टल्स हैं, व्हाइट क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, वो सब आप डाल सकते हो, तो वो खराब नहीं होगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका कलर खराब होगा ऑब्वियसली, वो तो एज आई टोल्ड यू यूज होगा, अगर धूप में हो रहा है, गर्मी में हो रहा है, सर्दी में हो रहा होगा, बट दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ या संचिता, इट्स गुड यू आर चार्जिंग योर वाटर एवरी डे, कीप इट अप, इट रियली हेल्प्स. मैं अपना पानी मेरा 2 साल से रोज चार्ज होता है सुबह. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो. आई वाज अ वेरी लेजी गाय, सो आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड. You know, I still might look lazy to a lot of people, but I have transformed, I know. Overnight and drink, no, don't do that. आप किसने अभी चैट में लिखा है कि ओवरनाइट क्रिस्टल्स को हम रख के सुबह पी सकते हैं, अभी आप लोग उसके लिए ट्रेंड नहीं हो. मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि crystal water, crystal elixir, nobody is supposed to make, nobody is trained for it. It is highly dangerous, it could lead to poisoning. आप लोगों में से किसी को नहीं करना है. वो नेक्स्ट क्लास का पार्ट है. इट इज एन एडवांस लेवल, क्योंकि हमें उसकी पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, उसके पीसेस या टुकड़े या उसका पाउडर अपने सिस्टम में नहीं चाहिए, राइट. सो डोंट डू दैट. क्रिस्टल अरोमा का और भी तरीका है. एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, which I also make by my brand name called Nature's Heaven. When we make the essential oils, there is a very limited amount of powder of these crystals which is added. जैसे अगर मैं आज थर्ड आई क्राउन चक्रा का एक अरोमा ऑयल बना रहा हूँ, which will be in a purple color bottle. So उसके अंदर मैंने एमेथिस्ट का कुछ पाउडर, एमेथिस्ट का कुछ पार्ट यूज करा होगा. सो वो उसकी प्रॉपर्टीज को आपके एयर में जनरेट कर रहा है. यू नो, इफ लाइक एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं ना घर में, या आप एक हीलिंग जोन में जाते हो, सो देयर इज अ डिफरेंट एम्बियंस, यू आर मोर रिलैक्स. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस how and why it is done.
So aroma oils is very important, and aroma oil आपके क्रिस्टल हीलिंग में एक और तरीके से यूज होता है. जैसे अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं या कोई आपके पास हीलिंग के लिए आया है, तो उसमें आप लेवेंडर ऑयल यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्सन. इफ दैट पर्सन हैज सम इंसोम्निया इशू, पेन इशू, या कुछ लव इशू है, तो वन ऑफ द ऑयल्स दैट कैन बी यूज्ड इज लेवेंडर ऑयल. So this is like taking your crystal healing for yourself and others to the next level with simple things which are usually available. Lavender oil is a very normal oil to be available in our houses, you know. और लेवेंडर ऑयल आप रात को, अगर आज रात को आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपके पास घर में है तो आप उसको अपने पिलो पे 2-2 ड्रॉप्स पिलो के दोनों साइड पे ना डाल के सो के देखिए. You will feel, if you're not allergic to it, if you don't get that allergy or sneezing, you will see that there's a different level of calmness to it. And I use it on my handkerchief every day. 1-2 drops डालता हूँ मैं उसमें lavender oil. Whatever oil you want to use, you can. Lavender oil is one of the oils that is the most widely used. Then there is a how many of you heard singing bowls, or you have singing bowls? नितिन के पास है सबसे पहले, भाविता, मंजोत, राइट. सो जिनके पास नहीं है ना सिंगिंग बाउल, आप आज ऑनलाइन सर्च करना एंड ट्राई टू हैव इट. सिंगिंग बाउल थेरेपी is a part of, you can say, aura cleaning therapy, house energy therapy, house aura therapy, or even a part of crystal healing therapy. Singing bowls, I am sorry, my office is closed, so I don't have a singing bowl right now in front of me to show you, but I'll show you online. Yeah, आप लोग देख सकते हैं. Singing bowl आप use कर सकते हैं to generate sound. And why I'm taking the name of singing bowl today is because singing bowl can be used with all type of crystals. Yeah, ईशा जी के पास है. ईशा जी को अगर आप highlight कर सकते हैं निकी जी, so everybody can see. ईशा जी के पास है. Yes, sir, I'm doing that. Yeah. I think मंजोत जी के पास भी है. उनका हाथ मैंने सबसे पहले ही देख लिया था, खड़ा हो गया था. So if ईशा जी sir, she will have to turn on her camera. That's when I can. ईशा जी का कैमरा ऑन है, मंजोत जी का भी ऑन है. ईशा जी की आप ऑडियो भी अगर खोल देंगे ना, तो ईशा जी इज एक्चुअली प्लेइंग इट फॉर अस. थैंक यू ईशा जी फॉर हेल्पिंग मी. ईशा जी को हाईलाइट करके आपका उनको ऑडियो खोलना पड़ेगा. मैं ईशा, ईशा जी, वी कैन. Yeah, now you can play. Yeah. Everybody just listen very carefully. Isha ji, once more. Yeah, I am doing. Yes. Puneet has an insight. It is like you have to place your hands firmly and then it is going to be played. Yeah, actually it has to be kept in a place, but since I'm just trying to make it visible to everyone. It's amazing. Yeah. So it's one of the most powerful tool or a bowl or whatever you want to call it in the energy healing or the crystal healing world. It is made out of 4-5 different metals. It is not just a normal bowl or something. These are called Tibetan bowls also. और ये अलग अलग materials के बनते हैं. सिर्फ brass का भी आता है और 5-6 materials mix होते हैं. इसमें if you play it correctly and then you guys, आप शांति से आंख बंद करके सुने जिन्होंने पहले कभी नहीं सुना है, तो it is like the sound of the universe. When astronauts are going outside, the earth atmosphere, this is the sound that is being recorded. जो वहाँ आकाश में out of earth के उसमें वायुमंडल में आवाज आती है, वो ये आवाज होती है. And this is like Om. This is like the sound of Om. So this is one of the most positive, easiest and the fastest way to cleanse the aura, cleanse the chakras. Now इसके साथ हम लोग crystals use करते हैं.
इसके बाउल के अंदर नहीं डाला जाता है क्रिस्टल, बट आप क्रिस्टल को इसके सामने रखकर इसको प्ले करते हैं। तो पहले तो वो क्रिस्टल एनर्जाइज होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, क्लेंस होता है, एंड वंस इट इज कंप्लीटली एनर्जाइज्ड, अगर वो पुराना है आपका तो अगर एनर्जाइज नहीं हुआ हुआ है, then after it is energized, then it amplifies its own energy and the energy of the singing bowl. तो आपके पास कोई बैठा है या आप बैठे हो और आप थोड़ा सा लेट डाउन फील कर रहे हो, तो आपने एक सिंगिंग बाउल उठाया और बस उसको प्ले ही कर दिया अगर 5-6 मिनट, सो यू विल फील द डिफरेंस इन योर चक्रास और योर बॉडी बैलेंस। और साथ में आपने कोई क्रिस्टल रख दिया उसके आगे, सो देन इट इज लाइक अ नेक्स्ट लेवल थिंग, यू नो, लाइक ए नेचुरल एम्पलीफायर है। The singing bowl is a natural amplifier and the crystal is a natural amplifier. So when two amplifiers meet, so it is like a DJ party. So you know, it's a DJ party for your body, for all your chakras. So this is an added thing. You know, I'm telling you plus things. You know, for the extra edge for yourself and for others. So that's one thing. And crystal bowl ho gaya. And these crystals are used in jewelry form also. I'll just show you. Jewelry form का मतलब होता है जैसे ये jewelry type bracelets हो गए, you know, which ladies can obviously wear. It won't look very nice in a man's hand. So these type of crystals, and I have some more. I'm trying to just show it to you. Okay. अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी इसके बाद में आपको ना जो मेरे पास लाइव और है बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं वो दिखाऊंगा। उधर वो क्रिस्टल की माला पड़ी होगी और इधर रुद्राक्ष का ट्री पड़ा होगा इस वाली में, वो दे रही हूँ। So I'll just show those things to you. Now the other use, another crystal which is like, जैसे मैंने आपको रॉक सॉल्ट बताया, that is called camphor. I don't know if we, I think a lot of people, we just take camphor as a हाँ स्नेहल जी आपने कुछ दिखाया अभी, you've got this माला, right, yeah, this is a very simple form. मैं अभी आपको ज्वेलरी फॉर्म में दिखाऊंगा, so you will enjoy it, especially the ladies will love it because वो it's like the best thing for ladies, you know. अभी आदमी लोग का इतना ऑप्शन नहीं है, simple things are there for us, but for ladies I have a huge collection and they're just marvelous. So I was talking about camphor. क्या है? I was talking about camphor, I'm sorry. So camphor is a form of crystal, you know. Camphor doesn't last long, but why it is a crystal? Why? Because normally आपने पूजा में अगर जलाया, आपने आग में जलाया, आपने आरती करी, वो उसका camphor का कोई effect नहीं आता है. It is burnt. It has just gone away. The best way to use camphor is to use it in an aroma lamp. You take an aroma lamp, you add you add some raw crystals of camphor to it, and you put a candle in the aroma lamp. और आपका अगर electric aroma lamp होगा, तो आप क्या होगा कि वो जो camphor है वो slowly disperse होगा, आपको पूरे घर में खुशबू आएगा. I think a few of us must be doing it. आप पहले से कोई use कर रहा होगा इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, right? Yeah, Sanchita is using it, right? I'll take it to the next level now. You've been using camphor, say for example, in an aroma lamp. एक छोटा सा पेड़ होगा, right? From now onwards, taking it to the next level is, there are two things how you can take it to the next level. Use it as an energy crystal to, you know, channelize your crystal, your chakras, and use it for healing as well. Start adding water. Aroma lamp liya. Sanchita, you want to say something? Can we open Sanchita for a second? I think she wants to say something. She really wants to add something to, you know, what I'm saying. Yeah, so I generally in the evening I burn camphor with water in electric lamp. I have noticed that too much of negativity is released out of your system and your home when you use that. So yeah, so now you've added to what I was already saying. So thank you. I'm happy to know certain people are using it that the way I recommend. Now taking it to the next level. पहला level था आपने normally aroma lamp को आग से जलाया, कोई काम का नहीं है. दूसरा है आपने उसको aroma lamp में जलाया, good use.
थर्ड है जो संचिता जी भी करती हैं, आपने पानी डाला, उसमें कैम्फर के पीसेस डाले और आपने उसको बर्न करा, इट विल लास्ट लॉन्गर, इट विल बी मच बेटर, इट विल गो मोर टू इनसाइड योर हाउस, ज्यादा फैलेगा, पानी के वेपर से ज्यादा जाएगा, कई लोगों को तेज जो लगता है वो भी नहीं लगेगा, तो अच्छा रहेगा। Manjot ji, you want to type or you want to say something in between? Okay. Nikki ma'am, she really wants to add something. Manjot Rathod. Yes, you can unmute. Hanji Manjot ji. Another thing, how I use it, the camphor is, I use a desi camphor, जो बड़े वाले pieces होते हैं, last longer. I put it on the sage. आप sage कभी जलाते हो ना, sage को जब आप जलाते उसके top पे रख दे तो it is amazing. It lasts, I mean, I think 2-3 hours तक वो aroma देता रहता. That can also, I use it that way. The whole house. Yes, thank you. Thank you for adding on to, you know, what I was saying. This was also one of the ways that I use it, but I'm not really telling a lot of ways because we are trying to talk about the basic stuff right now. So too much will be too heavy for a lot of people over here. So yes, water wala ek maine add kar diya, sage wala Manjot ji ne add kar diya. Now I will tell you one Ramban. ये तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, but I am telling you guys, ये आप use करो, मतलब it will be surprising, you will get surprising results and surprising reactions. किसी को बताना की जरूरत नहीं है, आप आज रात से इस क्लास के बाद से अरोमा ऑयल लीजिए, अरोमा लैंप में पानी डालिए, अरोमा ऑयल डालिए, अगर 5-6 बूंद आप यूजुअली डालते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डालिए, और रॉ कैम्फर, अभी मंजोत जी ने जो देसी कैम्फर बोला, दैट इज देसी कैम्फर, रॉ कैम्फर. व्हाट आई यूज एंड आई सेल इज कॉल्ड इंडोनेशियन कैम्फर. जो भी नॉर्मल कैम्फर होता है वो उससे इंडोनेशियन कैम्फर, मतलब यू नो माय प्राइस, इट इज लाइक 50-60 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर दैट स्मॉल पैकेट, बट इट इज beyond any other camphor that we have used till now. That raw Indonesian camphor that I use, even if we keep it in the open ना, वो evaporate नहीं होता 4-4, 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक घर में नहीं evaporate होगा, और गाड़ी में रखोगे धूप में, गाड़ी के अंदर, तो भी 5-5, 6-6 दिन evaporate नहीं होगा. So almost all the clients that I have who have taken the camphor from me once, they are always using it in their wallets, in their cars, in their house, या जिसको सांस नहीं आ रही और कोरोना के टाइम पे बहुत सुन रहे हैं उस वाले को, नॉर्मल कैम्फर इज फाइन, बट दिस इज लाइक अ नेक्स्ट लेवल. सो ये रामबान जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पानी के साथ थोड़ा सा अरोमा ऑयल और बहुत सारा रॉ कैम्फर ऐड करा. नॉर्मल कैम्फर डज नॉट मैटर, रॉ कैम्फर जो मैं बोलूँ, इंडोनेशियन कैम्फर स्पेशली दैट आई हैव, दैट आई इंपोर्ट, वो एक रामबान है. इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला सिंस 7 years. How it is a tried and tested formula is कि मैं घर में अगर जलाता हूँ तो I am on the first floor, my parents are on the ground floor, second floor पे हमारा मतलब ऊपर भी रहते हैं हमारे घर वाले, तो पॉइंट इज पूरे फ्लोर्स पे जबकि घर बंद है, वो सीढ़ी से भी हवा खुशबू जाती है, एंड एवरीबडी इज आस्किंग कि आपने क्या जलाया है. एंड इन माय एग्जीबिशंस, व्हेन आई एम डूइंग एग्जीबिशंस, दिस इज माय रामबान टू बर्न दिस एवरी टाइम, with an especially with a candle wala. अगर candle का aroma lamp वहाँ नहीं जला सकते, electric वाला है, but candle वाला I prefer more. Electric wala is fine if you're doing it for a very long time. People get attracted, like people are walking towards in the hall towards the other side, they just change their route. वो ऐसे attract होके उसकी तरफ आते हैं कि what is it that you're burning. So the combination of aroma oil, but a good quality aroma oil with raw camphor in an aroma lamp is going to do miracle. My third eye has been awakened unlimited times because I was using raw camphor with aroma oil for 5-6 hours non-stop. मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और वो दिखने लगता है, उठ के आ जाता है ये बाहर. जिसको पता है, जो ये साइंस जानता है, they immediately get to know what were you doing meditation? I said no, I was not doing meditation. मेरे यहाँ पे सुबह से चल रहा है. या फिर वो मैं एग्जीबिशन में जब होता हूँ तो वो चल रहा होता है, तो this thing gets activated. So this is one tool जिसमें आपने कुछ नहीं करा, आप सारा दिन सो रहे हो या बैठे हो,
और वो आपके घर में पूरा दिन चल रहा है और अच्छी क्वांटिटी आपने डाला है, your chakras are getting balanced, your chakras are getting cleansed, your crystals at your home, if they are in open, they are getting cleansed, and you are getting cleansed. So this is an bonus additional thing which is not a crystal, but this has got all the qualities of a crystal. This can be used as a crystal, and it is a sure and short formula. I have been using it for more than 7 years, and I have seen the results, and you also start using and see. मतलब आपने घर पे एक इलेक्ट्रिक लैंप ले लिया, कैंडल वाला मत चलाओ घर पे, और उसको आपने परमानेंट ऑन करके छोड़ दिया, आप भूल गए, और वो मतलब एक तरीके से लिटरली इट्स ऑन ऑल द टाइम. So that is one of the ways, you know. And the rock salt lamps, rock salt का जो मैंने आपको बताया था, उसमें एक और चीज मैंने बताना भूल गया, rock salt lamps. Rock salt lamps are an absolute must for, you know, anybody who's doing energy healing or chakra healing or crystal healing, because rock salt is a form of crystal. So in my house, in my office, at least one rock salt lamp is on 24 hours. एक तो बेडरूम में भी पड़ा हुआ है, हालांकि उसका लाइट बहुत कम होता है, बट रात को अगर डिस्टर्ब करता है तो वी पुट अ क्लॉथ ऑन इट. So that needs to be on 24 hours. You know, these are like Ramban things. You know, these are like addition things that I'm telling you. Bonus things than what is the normal way of doing anything in related to crystals. वो ऑन रहने का पर्पस क्या होता है? वो नमक होता है. नमक पानी में, हवा में, नमी में होगा तो गीला होगा, तो वो पिघलेगा, उतरेगा. जब वो गर्म ऑन रहेगा तो वो थोड़ा गर्म रहता है. गर्म रहने का मतलब वो पिघलेगा नहीं. एंड गर्म रहने का मतलब है कि आपके घर का जितना भी एयर है जो उसके पास से आ रहा है, जा रहा है, वो उसको क्लीन कर रहा है, पॉजिटिविटी कर रहा है, राइट? So these are the things that you need to add in your lifestyle if you want to do anything with crystals, if you want to add crystals in your life, ताकि आपको उसका पूरा benefit मिले. So you become a next level crystal healer or a crystal user. And I have already told you कि आप rock salt से नहा सकते हैं, powder से, and you can clean your house with the rock salt powder literally every day. अगर आप पानी के पोछे के पानी में कोई लाइजॉल भी नहीं मिलाते हैं, रोज प्लेन पानी with only rock salt powder, it is equivalent to a Lysol in killing the bacteria. खुशबू नहीं आएगी. जैसे मेरे को फिनाइल की खुशबू से एलर्जी है, इरिटेशन होती है, तो पानी में आपने वो डाला, वो फिनाइल का काम करेगा. जितने कीटाणु है, चाहे बाथरूम में यूज करना है आपको, पानी में डाल के, कमोड, वॉशरूम, एनीवेयर, it is going to be equally effective. So you need to add these things: rock salt powder, rock salt lamp, aroma oils, camphor, and all the other bonus crystals that I have told you about. You need to add these, right? So now let me show you some khazana, and this is specifically for the ladies. Men के लिए इसलिए क्योंकि men ladies को gift देंगे. A lot of ladies are smiling. अरे आदमी लोग भी हंस लो यार. If the girls are happy, you guys will be happy, right? Nikki is the happiest. So I'm not going to wear it and show you, but see, this is onyx. So this works as a rose quartz, you know, a cleaning crystal है ये. तो ये these are like, इसका पर्पस क्या है? अब आपने इतने हाथ में क्रिस्टल्स पहन लिए, गले में पहन लिए, अब आपको अभी भी पहनना है, कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में. So you're going to a party, this you can wear it on any dress, you know, this you can wear it on any suit or lehenga, or I don't know, whatever stuff ladies have. This is rose quartz necklace. These I am showing you for the core reason that how to incorporate crystals in your life without even letting others know, or without even yourself knowing it. See, these look very beautiful. I'm sorry, I'm not going to wear them for you guys. So yeah. You know, this is one of the things, and इतने forms है ना, इनमें unlimited forms है. इनका मैं pictures अभी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं live दिखा रहा हूँ जो मेरे पास अभी घर पे पड़े हैं. See, this is a Rudraksh tree. This is not a real Rudraksh tree, but these are real Rudraksh. मतलब आपको, अब आप कितने रुद्राक्ष पहन सकते हो? एक दो पहन सकते हो, कोई माला पहन लो. तो you know how to incorporate this. See, these are trees. These are made out of real Rudraksh. Can you all see, right?
just comment on something if you really like something, you know. I want every one of you to be active on the chat box rather than just questions. I just see everyone dropping down their questions. Say yes, no when sir is asking something, right? कोई क्रिस्टल नहीं पसंद आ रहा तो बताओ भाई, मैं I will show you something else. I still have a huge stock, you know. I'm just trying to create a mesmerizing feeling for you guys so that you fall in love with the crystals more. I mean, what more can you ask? You know, this is a living tree, in the sense that it is never going to grow. But when I say living, it is an energy being. You know, it is going to attract all the energies and, you know, give you that positive effect. So those necklaces were one of the things for the ladies. You know, then this Rudraksh tree was one of the things. Yesterday I showed you these things. You know, these are like, अगर किसी को समझ नहीं आता, मेरा ना ये क्रिस्टल्स को एक तरीके से रेकमेंड करना या बेचने का बहुत इजी तरीका है. मैं एग्जीबिशंस में किसी को नहीं बोलता हूँ कि ये क्रिस्टल्स है. मैंने एग्जीबिशन में मेरा पूरा सेटअप होता है. पीपल कम अप टू मी, लाइक आप में से कोई, आपको पता है, आपने कोई क्रिस्टल के बारे में पूछा तो बोलूंगा हाँ ये क्रिस्टल है. अगर किसी को नहीं पता तो मैं बोलता हूँ ये पेपर वेट है. Just to remove the myth or the confusion around it, and you know, stay away from negative people who are going to say, अरे ये क्या है, ये तो पेपर वेट है, आपने इसमें प्लास्टिक डाल दिया और ये तो पेपर वेट है, ये तो अच्छा लगेगा. So I start, this is a paper weight. Then if he wants to know, is inquisitive, or you know, people who already know, then I'll say, you know what, these are Rudraksh, this is copper, this is a metal filing, and this is copper wiring. This is a symbol of Reiki for energy, and this is a Shri Yantra. So this is one of the most powerful pyramids that mankind has made. अंदर चीजें सारी ओरिजिनल है, नेचुरल है, उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है. इसका पर्पस है टू किल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ मोबाइल एंड यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेट अ लॉट ऑफ एनर्जी. मतलब इसको आप अपने बेडरूम में रेकमेंड नहीं करूंगा इसको रखना. बेडरूम में आप रोज क्वार्ट्ज का रख सकते हो, ब्लैक टॉर्मलिन रख सकते हो. वो ना बहुत एनर्जी क्रिएट करेगा. यू विल फील समथिंग इज डिफरेंट. उस एरिया में कुछ जान है. आप ऑफिस में रखना शुरू करो, आपका प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं तो थोड़ा सा बढ़ेगा, 1% ही सही, विच इज ह्यूज. You will feel that energy, that एक होता नहीं है, if you go to your office and you're feeling यार डल है, नींद आती है, and if you go to someone else's office, आपका मन करता है I want to sit here, can I do my work from your office? So those type of things are there, you know. Then this I showed yesterday. See, this is in the form of a plate. Selenite है ये crystal. This crystal is used to charge any type of crystal in the world, all your cleansing of all of your chakras. तो ये इसको आप एज अ प्लेट रखोगे तो इसके ऊपर आपने ग्लास रखा, आपने इसमें पानी डाला, सो इट इज डूइंग चार्जिंग फॉर योर वाटर, इट इज क्लेंजिंग. सो यू नो, दिस इज हाउ यू इनकॉर्पोरेट क्रिस्टल्स इन योर लाइफ. दिस कैन बी गिफ्टेड. दिस कम्स इन अ सेट ऑफ 2 सिंगल पीस. आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो बॉक्स में डाल के, यू नो. सो दिस इज वन ऑफ द वेज. क्रिस्टल ज्वेलरी आई वाज शोइंग. मैं और आपको दिखाता हूँ क्रिस्टल ज्वेलरी में और क्या है. जैसे ब्रेसलेट्स तो मैंने कल थोड़े से दिखाए थे. आई जस्ट शो यू समथिंग एल्स. सो दिस इज अ रुद्राक्ष विद अ लावा स्टोन. सो कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट्स हो गए, यू नो. देन व्हाट एल्स? These are the raw forms of crystals. Today somebody was asking in the group, and somebody has asked me if I can give them raw pieces. So yeah, these are available. These are the raw pieces. ये कैसे दिखेगा? These are the raw. This is citrine. Yes, Snehal also has something citrine. तो ये raw टुकड़े होते हैं. ये natural tumbles बोलते हैं इसको. Somebody in the chat was asking about tumbles. These are tumbles. These can be used on the chakras, or they can be used in lockets. Yes, and they can be kept in pocket or any which way. So this is one way of you know, using this crystal. I'll show you more. I somewhere have turquoise, which looks very very beautiful in the raw form. Pictures तो बाद में दिखाऊंगा ही, but अभी physically आपको दिखाना चाहता हूँ. Yeah, Snehal has got good variety. हाँ, आप ही ने फोटो डाला था ना ग्रुप में भी काफी सारे crystals का. That's a good thing. You're doing a good job. So this is red jasper, carnelian. Sorry, these are carnelian. तो ये ऐसी टंबल फॉर्म्स है. रॉ फॉर्म को थोड़ा सा पॉलिश करके टंबल में बनाया जाता है. ये वो वाले फॉर्म. So we can even post these in the WhatsApp group later on. I think that would help them. Everybody
would be able to see? हाँ, I'll अभी आपको प्रेजेंटेशन में इनको फोटोज दिखाऊंगा मैं. Yes. फिजिकली थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो I'm just giving you an idea of how the crystals look. This was a purpose. The purpose of showing them was how to incorporate them in your life and how to use them in jewelry form also, right? And now the next thing that I wanted to tell you guys कि ये crystals को और बहुत तरीके हैं use करने के. Many of you are energy healers or healing of some type. Tarot करते हैं, कोई numerology करता है, हमारे इनमें ग्रुप में जो added है, कोई astrology भी करता है, right? So now these crystals can be incorporated in astrology, in numerology, in feng shui, and in tarot cards as well. And in fact, I think the first time ever these crystals were introduced was because of the tarot thing. So this is so when you guys are doing tarot, उसमें आपको कोई चीज में अगर किसी का इशू दिखता है, लव में, इमोशन में, फिजिकल में, मेंटल में, तो वो आप उनको ये वाले चीजें रेकमेंड कर सकते हैं अपने लिए, उनके लिए. और ये आपका एक एडिशन थिंग हो गया इन द टैरो. इन द एस्ट्रोलॉजी पार्ट ऑल्सो दीज आर यूज्ड एज सबस्टोन्स, एंड इन फेंग शुई दीज आर यूज्ड. इसका विंड चाइम्स होता है, कौन से कमरे में रॉक सॉल्ट रखना है. एंड इन वास्तु ऑल्सो दीज आर यूज्ड. लाइक अगर आपका दरवाजा जो गलत डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर एक कॉपर वायर लग जाती है या ट्यूब लगती है जिसके अंदर यही सारे स्टोन होते हैं. सो दिस इज one of the ways how to use it. Raw form में हो गया. So yeah, I think I'll just now show you the slides of the pictures and certain properties that I have made for today. Just let me open it for you and walk you through the pictures. So my screen is visible now. It's clear, right? अच्छे से दिख रहा है ना सबको? So कल की तरह छोटा तो नहीं दिख रहा? So we can yes, it's visible now. Yeah, Nikki, just give me 5 minutes. I'll just walk them through these pictures, then we can take the question and answer, right? Yes, sir. Great. So if everybody can see, this is a rock salt slab. ये मैं आपको सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको जितने प्रोडक्ट्स दिखाए और अभी जो मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट्स फोटोज में दिखा रहा हूँ, these are all part of the advanced crystal healing class, which means that you will be taught how to use the jewelry or the trees I have shown or the bracelets I have shown or the paperweight I have shown, the triangles I have shown कि ये अब आप next level पे advanced healing class में उसको कैसे incorporate कर सकते हो अपने healing world में for your clients and yourself. So ये rock salt slabs को आप clients के पैरों पे या body parts पे रखकर इसको use कर सकते हैं, घर पे रख सकते हैं. ये रॉक सॉल्ट लैम्प है, इसको आप ऑन करके घर पे रखते हैं. प्योरीफाइंग एयर, ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं. This is again a rock salt lamp. These are natural shapes. I keep all of them in the natural shapes. और artificial shapes भी मैं रखता हूँ. ये rock salt soaps हैं. मैंने rock salt powder बताया था, rock salt soap भी मिलते हैं जिससे कि हम लोग नहा सकते हैं. And one addition of another type of crystal is there. These are called rock salt soaps, crystal soaps. क्रिस्टल सोप्स होता है जिसमें साबुन होता है, साबुन के अंदर क्रिस्टल होता है. जब आप खत्म कर दोगे उसके तो अंदर से क्रिस्टल निकलेगा. ये रॉक सॉल्ट सोप है. देन आई वाज टेलिंग यू अबाउट ओनेक्स. सो दिस इज द ओनेक्स. दिस इज जिससे भगवान की मूर्तियां भी बनती है. ये इनके अलग अलग पर्पसेस हैं. आई एम जस्ट वॉकिंग यू थ्रू देम वेरी फास्ट. ये ओनेक्स हो गया, इनसे मूर्तियां बनेंगी या इनको भी आप क्लेंजिंग में यूज कर सकते हैं. रूट चक्रा पे अलग अलग चक्रा के यूजेस है. Black onyx. Then amber. Amber is like a crystal which is formed from a tree. Tree का sap होता है, जो जैसे ट्री खड़ी है और उसके तने में से कुछ लिक्विड गिरता है. So it becomes a fossil. It is a very, very strong crystal which can be used for grounding and a lot of other purposes. A lot of Hollywood celebrities, yes, use amber. अगर आप उनकी pictures देखेंगे तो lot of Hollywood celebrities are using amber because this is very expensive. Yes, sacral chakra and बहुत सारे चक्रास पे यूज होता है. ग्राउंडिंग स्टोन भी है. हैम्बर के अंदर कई दफा आपको कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं क्योंकि पेड़ के नीचे कीड़े होते हैं, स्कॉर्पियो होता है और वो एम्बर उनके ऊपर गिरता है और वो चिपक जाता है और वो उसी के अंदर, ये देखिए स्कॉर्पियो. I had a piece like this and I have sold it for very huge amount.
because it had a small scorpion inside it. So this is amber. This is petrified wood. लकड़ी जो fossil बन गई है. Extreme healing and grounding properties. इन सबको मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इनको धीरे धीरे अपनी कलेक्शन में ऐड करें, और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास बेसिक हमारा 7 चक्रा सेट होना ही चाहिए. अगर हम एडवांस क्लास में जाते हैं, सो वी ऑल नीड टू हैव अ 7 चक्रा सेट बेयर मिनिमम. और ये जितने दिखा रहा हूँ ये एडेड है. उसके साथ अगर आपने ये सब भी तब तक खरीद लिया होगा तो इट इज वेरी वेरी गुड. आपको ऑनलाइन कहीं से मिले बहुत अच्छा बात है, नहीं अदरवाइज यू कनेक्ट विद मी because my courier service is still delivering across India. Even outside India, I'm still, sending them. These are angels made out of the same crystals. किसी को ये angel form में use करने का मन है, तो वो angel में भी ले सकता है. It's not necessary that you always need to have it in a certain form also. This is like an angel like I showed yesterday also. This is mercury. Mercury भी healing में use होता है, which very few healers use. Mercury is not really used by a lot of healers, but this is a very powerful thing. ये स्पाटिक है. स्पाटिक से ये रुद्राक्ष का ट्री है. ये रुद्राक्ष का ट्री मैंने आपको जो दिखाया था थोड़ी देर पहले, और ये रुद्राक्ष के अलग अलग नेचुरल फॉर्म्स हैं. क्रिस्टल हीलिंग में रुद्राक्ष भी यूज होता है कि किसी को कोई इशू होता है तो आप उसको रुद्राक्ष भी रेकमेंड करते हैं पहनने. रुद्राक्ष का पानी बनाया जाता है, क्रिस्टल हीलिंग का पार्ट है. रुद्राक्ष के अलग अलग फॉर्म्स हैं. रॉक सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट रूम्स हो गए. ये रॉक सॉल्ट और अरोमा ऑयल को मिलाकर भी एक थेरेपी करी जाती है, which is not a lot of people can do because रॉक सॉल्ट खराब हो जाता है जल्दी. Just give me a second. अच्छा आपका होस्ट हट गया. Sorry. Yeah. Just give me a second, guys. Nikki, you're the host now, Thank right? you, sir, for making me the host again. And yes, I see most of them are really excited and they're asking for the course details. Then yes, we are coming up to that and we are going to share, and then we'll be taking up the Q&A. We are here for another 10-15 minutes, so don't worry, we'll address all the Q&A, right? So first we'll tell about, so would you like to share the content? Yes. Do you have the slide? Yes, I'll do that. आप वो एक दफा ऑन कर दीजिए, अभिषेक ने अगर आपके साथ शेयर करा था. So now we are coming up to the content that we will be introducing in the advanced crystal healing workshop, which takes you to the next level, because here we have introduced all the basic crystals, their basic use, plus I have given a lot of bonus usages of these crystals and added a lot of bonus crystals which a lot of people don't know or use. So once the slide is there, I'll start letting you know. So this will be from the 28th to the 30th. This is the timing. Why we have kept this timing is so that most of the people should be available. Even if you're not going to the office or certain people are, तो आप एटलीस्ट इतने बजे तक घर पे होंगे, फ्री हो सकते हैं. आफ्टर दिस you can have your dinner. So it's a 3-day mentorship. Can we go on the next slide? Yes, so it's a 3 days of mentorship, as sir said, and the class is from 8:30 p.m. to 9:30. And as it is always not going to end for 1 hour, so it might extend. So you will have to be ready till 10. I am just telling you from prior itself. And coming up to the contents, what we are going to cover, sir, if you could explain them in detail, they will have clear idea about it. Yeah. So with prior experience to me, Nikki is, making you guys aware कि भाई 1 घंटे का class 1.5 घंटा 2 घंटा चल जाता है, because I don't want to stop, once I start, because when I'm trying to give you the knowledge, I want कि वो कुछ miss ना हो जाए. At least even in the introduction part, I wanted you to have something to look forward for the next advanced class.
So in these classes, in the advanced class, what we will be going. Thank you, Rajan. What we will be, taking you through is like what is crystal healing. एक उसका और एक बेस और कोर, उसकी जो एक डेफिनेशन है, कोई आपसे आके पूछेगा तो वो मैं आपको समझाऊंगा. What is the history of crystal healing? How it emerged, या क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज होता है, या कैसे इंडिया आया. क्रिस्टल्स और उनके कलर्स के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर ऑफ द क्रिस्टल एंड द लाइट दैट इट गिव्स आउट. ये दोनों में काफी डिफरेंस है. सारे क्रिस्टल सेम लाइट नहीं देते. इफ वी टॉक अबाउट अ पिंक क्रिस्टल, इट विल गिव अ डिफरेंट लाइट. एंड क्रिस्टल में और जेमस्टोन में डिफरेंस क्या है? अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग इन द ग्रुप कि क्रिस्टल और उसमें जेमस्टोन में फर्क क्या है. वो भी हम लोग कवर करेंगे. कौन से क्रिस्टल्स हीलिंग के लिए यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, एंड what are the crystals that you need to work with chakras, what type of crystals you need to use for which chakra. And this is a very important part which we don't know. A lot of people don't know. Thank you Shweta. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिस्टल क्लीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एनीबडी टू कम इनटू दिस फील्ड फॉर देमसेल्व्स और फॉर एनीबडी. बिकॉज इसको क्लेंस जब तक आप नहीं करेंगे, आपके वो क्रिस्टल्स का इफेक्ट आना बंद हो जाता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस. Tuning a crystal, which is very important. How do you tune your crystal to make it work for you? चार्जिंग इन क्रिस्टल्स, उसके बाद चार्ज करा जाता है, एक्टिवेट करा जाता है, प्रोग्राम करा जाता है फॉर द पर्पस और फॉर द पर्सन. रीप्रोग्रामिंग करा जाता है जब आपने एक इंसान पे यूज कर लिया है. आपने अपने ऊपर एक क्रिस्टल यूज करा, अब आपको अपनी मदर के लिए यूज करना है, तो आपको उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा. एनर्जी मैनेजमेंट, हाउ यू कैन ग्राउंड योरसेल्फ. रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू गाइस यस्टरडे कि आपका कहीं ना बहुत एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है, हेवीनेस लगता है, सर दर्द होता है, और यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ आफ्टर डूइंग द क्रिस्टल थेरेपी और समथिंग. सो तो उसका एक प्रोसेस होता है ग्राउंडिंग to make yourself relaxed. Then how you can do meditations and crystal water and uska essence या elixir कैसे बनाते हैं. So we can go on the next slide. Yes. So I would just want to know how many of you are really excited to step into an advance and learn more from Krishna sir. I would just like yeses in the chat box. Snehal is already raising her hand. Let's have some quick energy here. Right, I want to see how many of you, and then we share all the details. Yes, a lot of yeses, a lot of yeses. Okay, that's great. So now again, coming up back. Yeah, so this exciting class, which I see a lot of people already being excited about, would include balance your aura. कि आपका ऑरा जब तक बैलेंस नहीं है, आप दूसरे को नहीं हील करते. आप खुद ही पैनिक मोड में हो तो आप दूसरे को कैसे हैंडल करोगे. सो पहले हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, योर ऑरा, योर एनर्जी, योर मेंटल एंड फिजिकल फील्ड्स. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकली बैलेंस में हो, कि खुद ही हिल रहे हो या घबरा रहे हो या कांप रहे हो while doing the energy. And how to promote the mental well-being through this, increase your positivity and focus. How to detox from unwanted patterns, energy blocks in life for yourself, for other people as well. And आपका जो ability to cope up with an illness and disease, like somebody who gets unwell, वो एकदम mental block हो जाता है, I am not going to survive, या मेरे साथ तो बुरा ही होगा. So उनको cope up करने का तरीका है mentally और through crystals. So yeah, we can go on the next slide now. Yes. Now coming for the registrations, right? So as most of you are excited, even we do have a gift for you here. So this is the actual cost when we're talking about the class. This is the actual cost of the full course, that is 1,999, but only for the quick action takers, only for the most crystal lovers. Here we provide you at 1,499, and this is only for now. So when I share the registration link, we are here for Q&A. Until the session goes, I want every one of you to register
and book your slots for 1499. You will be receiving certificates. So this is a certified course. You will be receiving recordings plus the PDF of important notes. So these are the things that will be shared to you. And talking about sir has a complimentary gift also for you added here. So yeah, seeing the energy for everyone in the chat room in the WhatsApp group, and a lot of people messaged me also regarding a lot of queries. So I, besides the offer that is being offered by Nikki, that for people who are actually going to join while this thing is already on, the video Zoom session, unke liye offer 1499 hai. So that stands for those people. For there is one more offer from my side personally. Whoever will register today, from my side, I will be giving them a complete numerology analysis free of cost. Which means that how I do numerology is I will give you a Word file, a complete Word file with all your details, including your lucky number, your lucky colors, your lucky days, and your lucky name, your name spelling, which needs to be rectified to the to your awesome lucky name, to जो आपके date of birth से match होगा. And there is a thing called missing numbers in numerology, which means the planets that need the most attention in your life to be taken care of, उनका remedies मैं दूंगा, which remedies are normal remedies जो हम daily life में अपने घर बैठ के कर सकते हैं. उसके अलावा the remedies are crystal remedies, the crystals that you can use. This is how I was telling you that the crystals are attached with numerology as well. So this is a bonus for everybody. ये जो न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट है, I charge 1400 to 1500 rupees for this, for every single person who takes consultation, for anybody who's actually excited enough, even to, show their hands and jump onto the, do the registration. Nikki will guide you how to do it, and make sure जो लोग आप WhatsApp ग्रुप में एडेड नहीं हो, because मुझे लग रहा है काफी लोग एडेड नहीं है, वो प्लीज अभी निक्की को लिंक मांग ले, या मैंने अपना नंबर डाल दिया चैट में, वो मेरा नंबर लेके मेरे को मैसेज डाल दे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, निक्की ऐड कर देगी. So that is important. So coming back to this numero gift that I am giving you bonus, this will be a complete numerological report in the Word file for whosoever joins today. So probably आपकी क्लास मेरे को लग रहा है फ्री हो जाएगी, because 1999 का पहले ही 1499 हो जाएगा, और उसके बाद मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूँ उसका भी मैं इतना ही चार्ज करता हूँ from everyone. So this will be given to you free of cost with all your remedies for missing numbers, for your name correction, even lucky mobile number will be added to it. So let's hope with crossed fingers and lucky crystals in hand that all the people who are excited are actually joining us. So let's take it to the next level and start helping people. Because one important thing I will be telling you, it might be out of context over here, but to be a healer for yourself or for any other living being, we need to be compassionate. So when I am trying to help you facilitate, go into the part of being a healer in any form, I am also requesting you guys to be passionate. So when you have this, जब भी आप ज्ञान सीख लेंगे, so you can help people. You will have a tool जिससे कि आप पैसे के अलावा भी दुनिया की हेल्प कर सकते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम में. So it could be a corona patient, it could be someone who's not well mentally, any form. So I'm trying to get you into this compassion field with an open heart, and as a welcome gift for people who are joining us today, I'll be offering you a complete numero analysis, and I hope I'll be able to give you a positive effect in your life as well. So yeah, over to Nikki, and thanks everyone for being really nice. Yes, so I've shared the registration link, and I'll share the WhatsApp group link as well. So if somebody is not able to contact sir, we'll have Q&A. I'll just unmute everyone. Just the last thing, right? So I'm dropping down my number. Kindly text me hi on WhatsApp, and I'll add you to the WhatsApp group. My number is there right away in the chat box. And in meanwhile, other participants can start your registration.
And right now, everybody can unmute this, maintain the decorum of the class one by one, right? And the people who are already joining in the full course, we are going to have a blast. Yes, So, every one of you can now unmute. I want to ask, everybody has got the number of Nikki. Nikki is the most popular person over here. So everybody needs to have a number. Yes, if you want to try any other courses also at Bit Class, you can always reach out to me. That's why I'm saying she's the most popular. Well, she is the roadmap to your knowledge. So anything in the world you want to ask, or she can get you in touch with anybody in the Bit Class. Think कि कुछ भी आपको knowledge चाहिए, you want to get in touch with anybody. So 2 numbers are important right now. Please feed the number of Nikki and my number as well for anything that you want to know about the next class or any other thing that you want to know. Okay, so now one by one. Yeah. Hello, sir. I have done registration. Congratulations, Kaushalya. आपके नाम का स्पेलिंग तो सबसे पहले ठीक करो. सर, जो आप जो 101 न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन देंगे, वो हर एक इंडिविजुअल की नेम के बेस पे होगी या उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो सम होगा? दोनों पे होता है. I will send it to you. There is no one-on-one for the numerology session. I will send it to you on your WhatsApp number. I will, yes. Yeah. But you talk to me about it अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. We can. And sir, we had a question, like you said in the WhatsApp group also, that we can address in this today's session. The question about charging and cleansing. मैं उसके मतलब बेसिक 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको नाम से बता देता हूँ, बट उसका जो प्रोसेस है वो लंबा है. लिटरली एक क्लास पूरी एक प्रोसेस में निकल जाएगी. उसके तरीका है मून लाइट से चार्ज करना, एक. दूसरा है सनलाइट से चार्ज करना. तीसरा है स्मजिंग. somebody was talking about polo, some herb, I'm forgetting the name. और ऐसे 3-4 herbs है, स्मजिंग से कर सकते हो. और चौथा है रॉक सॉल्ट वाटर से कर सकते हो. और 5वां तरीका जो कि मतलब बहुत ही इफेक्टिव है, get your crystals charged by an energy healer like me. So for an energy healer like me, I can either just hold the crystals in hand or I can just charge them through pictures also. आपने मेरे से अपने क्रिस्टल की फोटो शेयर करी and I will charge them. तो ये तरीके हैं चार्ज करने के जो अभी आपको आते नहीं है. वो उसमें से कुछ तरीका एडवांस क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा मैं. नॉट ऑल, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल तरीका विल बी फॉर 1 day 2 day. तो उसके लिए भी अलग क्लासेस हो सकती हैं, बट अभी इंट्रोडक्शन हो गई और नेक्स्ट जो हमारे मास्टर क्लास होगी एडवांस क्लास, उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा, उसमें तरीका बताऊंगा. But sir, basically the steps क्या हैं? Like first is to clean a crystal like using a running water, and then holding in the palm and then programming it. वो बेसिक है जो मैंने ये वाला तरीका मैंने कल आपको बताया था कि आपने अपना क्रिस्टल साफ करा पानी से और अपने हाथ में पकड़ के उसको प्रोग्रामिंग करा कि मैं दिस इज द पर्पस आई एम यूजिंग यू फॉर, गिव मी दिस पॉजिटिव इफेक्ट. सो दैट यू कैन डू. वो तो आप अभी से चालू कर सकते. Okay, and how often we have to do it? Like 15 days, monthly? Not very regularly. Don't do it very regularly. Yesterday, one of the females had asked the question कि मैं use कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा ही इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, तो वो ज़्यादा बार-बार चार्ज नहीं करता. Once in a month, actually 4 से 5 महीने इससे पहले जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत हल्का महसूस कर रहे हो तो आप उसको रेगुलर कर सकते हो 1-2 महीने के अंदर. रोज या हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं करना. Thank you, sir. So I have one question. Yes. I have noticed that every year some or the other person in my family is sick, and there is a fixed place where the sick person, I mean, एक जगह है जहाँ पे always वहाँ पे sick person ही रहता है on that bed. So what am I so आपने अभी जो वुड का बताया, so वो मैंने connect किया, मतलब so am I supposed to remove Yes, am I supposed you can actually change the, you're talking about the bed, right? You're talking yeah about the bed. अभी every बहुत year सालों हाँ से है और वो एक तरीके से आपके घर का बीमारी का कॉर्नर ही बन गया है.
Correct. तो वो आप Correct. बेटर है अगर आप वुड को चेंज करें. अगर इमीडिएटली बेड बड़ी चीज है, एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते, अभी सिचुएशंस भी लॉकडाउन की है, तो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन पुट अ रॉक सॉल्ट लैम्प ओवर देयर. 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए, कभी भी बंद नहीं होना चाहिए. रॉक सॉल्ट लैम्प आप कोई भी इंसान अगर आप में से कहीं पर भी यूज करते हैं, चाहे बाथरूम में हो चाहे कमरे में हो, वो 24 घंटे ऑन रहना चाहिए, तभी उसका कोई फायदा है. अदरवाइज इट इज जस्ट रॉक सॉल्ट लैम्प. आप उस कमरे में रॉक सॉल्ट लैम्प रख सकते हैं. आप उस कमरे में अरोमा ऑयल विद कैम्फर, जो मैंने अभी आपको एक रामबाण बताया, जो मेरा ये मिक्सचर है, वो मिक्सचर करके जितना देर मैक्सिमम ऑन कर सकते हैं ऑन करिए. एंड यू नीड टू कीप ब्लैक टॉर्मलिन, व्हाइट क्वार्ट्स एंड रोज क्वार्ट्स और एमेथिस्ट. ये 4 क्रिस्टल है जो उस कमरे में ना 24 घंटे परमानेंट रखे होने चाहिए. एमेथिस्ट है हीलिंग के लिए, रोज क्वार्ट्स है लव हार्मनी रिलेशनशिप के लिए, बंदे को अच्छा महसूस होगा, लव महसूस होने के लिए. व्हाइट क्वार्ट्स है पॉजिटिविटी के लिए. ब्लैक टॉर्मलिन है टू कीप अवे एनी नेगेटिव एनर्जी. Will this work, camphor evaporator? Yes. I actually use this one for that area. Yes, this is fine. You can use it. Right, sir. I have a question. Yes, Swati ji. Swati, yeah. So I just wanted to ask you, once we learn this advance code, I've registered already first, done with the payment and everything. So when we learn this, like if there are few people who have blockages and it's been there for years, that if कुछ मिलता है, for example job लगती है, थोड़े टाइम बाद चली जाती है, and this is a pattern जो बहुत सालों से follow हो रहा है. I know a lot of people. So is it possible when we learn this healing we can remove those blockages? Because कभी वो लगता है कि किसी ने शायद black magic किया है, and we don't have access to tantrics these days. मतलब हम नहीं जाएंगे किसी से पूछने, और हम नहीं है तांत्रिक, we're not all these things, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप टैरो करो, आप ये करो, आप ये तो नहीं हो मतलब. So will we be able to cure that person, get him out of that misery state? Yes, to some extent, you will be able to do it, because what you will be able to do it after this is you will be able to balance his chakras, or balance his energy field. तो ओवरऑल उसको एक महसूस होगा, क्योंकि कुछ उसने पहना है, कोई आपसे हीलिंग ले रहा है, कोई आपसे क्रिस्टल्स की थेरेपी ले रहा है, वाटर एलेक्सर पी रहा है, आप वाटर चार्ज कर रहे हैं, तो कुछ हद तक उसको फर्क पड़ेगा. उसके अलावा द नेक्स्ट लेवल इज, जैसे कि मैं आपको एक न्यूमरोलॉजिकल बुक बना के दे रहा हूँ, लाइक से प्रॉब्ली यू आर लकी वन. Sorry sir to cut you here. Krishna sir, sorry to cut you here. Everyone kindly go on mute, because sir is going to address everyone each one by one, and yes, it is going to be much more clear, right? So every one of us will be on mute, and yes, so you can go ahead now. It will be clearly audible. Unmute yourself. Yeah. So what I was telling you, for removing the blockages, how I was telling you that you will have to unmute yourself and listen to sir. There's a background sound. स्वाति आप अनम्यूट कर दो, आप मतलब म्यूट कर दो आप. हाँ ठीक है, नाउ इट इज फाइन. सो आप एक बेसिक लेवल तक, उसके चक्रास के लेवल तक आप उसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो. बट देयर इज सर्टन थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड द चक्रास. लाइक अब चक्रास तो आपने उसके बहुत अच्छे हो गए, फॉर एग्जांपल, या एक लेवल तक बेटर हो गए पहले के मुकाबले, बिकॉज व्हाट यू से यू आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट द अदर पर्सन इंटरप्रेट्स वो रिस्पॉन्सिबल है. अगर आप आज उसको एनर्जी हीलिंग दे रहे हो और वो इतना ज्यादा नेगेटिव स्टेट में है कि वो आप देने के बावजूद भी वो बोल रहा है नहीं मेरा तो कुछ होना ही नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हाँ आप कर तो रहे हो मैडम, 2 क्लासेस हो गई, मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही. We are not magic creators, we are not doing black magic, we are not doing for any therapy. आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी करवा लो, आप मेरे से न्यूमरोलॉजी करवा लो, एनर्जी हीलिंग करा लो, क्रिस्टल थेरेपी करा लो, और भी कुछ 2-3 थेरेपीज आई डू. मैं आपको टाटा अंबानी बिरला नहीं बना सकता. Nobody can promise it. I know. वो सिर्फ the difference is I am giving you a medicine. आप वो मेडिसिन आपको इफेक्ट करेगी, आप भी थोड़ा सा विश्वास करो. कई दफा अगर ऐसा भी हाल हुआ है कि हम लोग कई लोगों को who don't believe in crystals or who don't have a lot of money, उनको मैंने सिर्फ एक ये टुकड़ा क्रिस्टल का दिया, एक पीस दिया हुआ मैंने, ये मैंने लाइफ में अपने यूज कर रखा है, 100 रुपए में दे दिया कि चल यार
he can't afford it. और उसको बोल दिया कि भाई देखो ये क्रिस्टल मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा ये 2,000 रुपए का पीस होता है, एंड आप इसको पॉकेट में रखना, आपने 24 घंटे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो बंदा बार बार मेरी एग्जीबिशन में आ रहा है, ही इज नॉट बाइंग एनीथिंग बट ही इज शोइंग मी अगेन एंड अगेन, देखो आपका स्टोन मैंने जेब में रखा हुआ है, देखो मेरी जॉब लग गई, अब मेरी लड़ाई कम होती है, समथिंग और द अदर. सो इट इज हियर what we are trying to do with all of these things is mind first, aura, energy और चक्रास और माइंड. तो आप उसके ब्लॉकेजेस एक लेवल तक खोल पाओगे, उसकी थोड़ा सा उसको आराम और बेटरनेस होगी. अगर वो बहुत रिसेप्टिव होगा तो हो सकता है उसकी जॉब ना लगे बट उसके दिमाग में इतनी शांति आ जाए कि वो बोले भाई साहब मेरे पास ना 5 साल से नौकरी नहीं है बट मैं बहुत खुश हूँ. क्यों? छत है, मेरे पास खाना मिलता है, पूरे इंडिया वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, मेरे को तो कोई परवाह नहीं है भाई साहब, रोटी कपड़ा मकान टीवी, और चाहिए क्या फिर लाइफ में. सो एक वो लेवल आ जाता है यहाँ का, that I don't care, I don't give a rat's ass to what is happening in the world, nothing bothers me, I am the happiest person in the world. Even if I have a bike, I don't have a car, I am the happiest person in the world. So those type of people you must have come across that their contentment level is very high. तो वो वैसा लेवल हो जाता है. नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स कि आपको और भी चीजें उनकी ब्लॉकेजेस हटानी है, तो उसके लिए हमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को इस साइंस से कंबाइन करना पड़ेगा, which means that for example the report that I am giving you, जो रिपोर्ट मैं आपको दूंगा उसमें आपके मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज होंगी विच विल बी इन रिलेशन टू क्रिस्टल्स ओनली. तो वो चीजें भी इनकॉर्पोरेट लाइफ में करेंगे तो वो चार्ट बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है. Say for example in your chart your Saturn is very bad, so I cannot change the Saturn, it is in the world, it is a cosmos thing, it is a planet, but I can change the effects, how it will affect you. मतलब आपको थोड़ा सा फर्क आएगा लाइफ में. So you when these type of cases comes to you जिसमें कि अब आप भी स्टक हो गए हो कि इसके बाद अब कुछ नहीं हो रहा, उसकी 1 महीने की क्लास भी ले ली आपने, हीलिंग भी कर दी, so then you can get in touch with me to get the numerology or the astrology or do the remedies which are beyond chakras, because कुछ चीजें हमारी चक्रा और हमारी बॉडी से भी आगे. So yeah, thank you for your question. So yeah, anyone else and excitedly आप हाथ ऐसे भी रेस कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो और वीडियो पे भी. सर मेरा क्वेश्चन रुद्राक्ष के बारे में है, क्या सब लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? और उसका there is no side effects of रुद्राक्ष, because once I started wearing anger portion थोड़ा ज्यादा हो गया था, I was getting more angry. See, रुद्राक्ष बेसिकली कोई भी पहन सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट अब वो कई दफा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका मंगल, अब हम अगर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के देख रहे हैं, वैसे तो कोई भी पहन सकता है, नो प्रॉब्लम, बट आपका मंगल अगर बहुत स्ट्रांग है, मे बी आपने 9 फेसेड और मे बी 4 फेसेड 3 फेसेड कुछ भी ऐसा फेस वाला आपने रुद्राक्ष पहन लिया, तो वो उस प्लेनेट को इनहेंस कर रहा है, तो वो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा एंगर उससे बढ़ गया हो, या हो सकता है कि उसका आपके रुद्राक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं, हो सकता है वो आपका पीरियड ऐसा चल रहा हो, या आपके इरिटेशन लेवल ऐसा हो, या फिर आपने जिस दिन से वो पहना आपने दिमाग में वो गुस्सा देखकर एसोसिएट कर लिया, यार जिस दिन से ये मेरी लाइफ में आया ना मेरे को गुस्सा आता है, और जिस दिन आपने उतारा ना, आपको उतारते ही ऐसे करते ही आपको यहाँ पे ना हल्का महसूस हुआ, हाँ यार ये उतारते ही बहुत हल्का लग रहा है भाई, अब तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, तो वो आना ही नहीं है. ओके, सो डोंट वरी, अदरवाइज ऐसा नहीं, कोई भी पहन सकता. जैसे मैंने नीलम के लिए बड़ा स्पेसिफिकली बोला था ग्रुप में कि नहीं पहनना, तो ऐसे मैं बाकियों के लिए भी बोल सकता हूँ, तो ऐसा वहम नहीं है. न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स और क्रिस्टल थेरेपी इज लाइक अ वहम फ्री पढ़े लिखों का साइंस है. जिनको किसी और चीज में बिलीव नहीं है, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है और उनको ना पॉजिटिव अच्छी चीजें करनी है, और ये सब नहीं करना भाई साहब, मंदिर वंदिर और ये पूजा पाठ और ये ड्रामा तांत्रिक पंडित हमें नहीं करना. So if you are educated and you don't want to be educated in any other thing besides the logical science, then do this. Okay, thank you. सर सॉरी मैं रह गया था, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक लिस्ट बता दीजिएगा क्रिस्टल एडवांस कोर्स के लिए हमें कौन कौन से क्रिस्टल्स चाहिएंगे, और आप अपनी डिटेल्स भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें क्रिस्टल लेने के लिए.
You are in the coming WhatsApp. up. WhatsApp पे तो मेरा number है ना? नहीं sir, जो master class के लिए लोग आ रहे हैं ना, who have registered for the full course, you will have your separate group where total mentorship will be given by sir. Okay, don't worry about it. Just your new WhatsApp group will be formed in another 2 days. I will drop a message on the group that people who have registered, kindly message me. Just message me your details. With the message, you might have got the confirmation message, right? Or else I will have your name. Don't worry about it. Just message me. I'll add you in the new group. Okay. And somebody needs to tell me who one all more have been question. added ना वो group में, ताकि आपका date of birth details मेरे पास आए, so that I have to create your numerology report. So I will try my best कि मैं जितने maximum लोगों को numerology report, which is a gift from me for whosoever who is joining right now, ताकि आप लोगों को वो analysis पहले से मिल जाए और बाद में आप लोग मेरे से classes में तो नहीं, but बाद में you guys can discuss it with me. सर आई एम वेरी एक्साइटेड। सर मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना था कि एक्चुअली मैंने सुना है कि जो जेम स्टोन होते हैं वो थोड़ा जल्दी वर्क करते हैं और क्रिस्टल को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब it is partly true. It is partly true because see gemstones are very specific to the planets. Gemstone अगर लाल रंग का भी है तो वो सिर्फ सन के लिए है, वो किसी और प्लैनेट के लिए नहीं है। एंड उसको आप अगर अपने ऑरा के लिए तो नहीं, चक्रास के लिए यूज करोगे तो वो इट डज हेल्प बट नॉट वेरी एक्टिवली. इट इज वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट प्लैनेटरी लेवल. चक्रा के लेवल पे वर्क करता है बट इट इज वर्किंग ऑन अ प्लैनेटरी लेवल, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से वो आपका ऑरा को या एस्ट्रोलॉजी चार्ट को बैलेंस करता है. जेमस्टोन्स का ये हो गया. और क्रिस्टल्स, यस, दे आर मोर बेनिफिशियल फॉर द चक्रास, फॉर द हीलिंग, फॉर द ऑरा, फॉर एन इंडिविजुअल ऑरा को क्लीन करने के लिए, चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए वो क्रिस्टल्स ही इफेक्टिव है. जेमस्टोन्स आर इज लाइक फॉर अ डिफरेंट पर्पस. So while you were saying about wood as a crystal, you were also saying some about cotton, that it is also a crystal because it observes. So how do I use it? I mean, it's not a crystal, but yeah, cotton has the work properties it does. Yes. It has the properties to absorb both the feelings of positivity and negativity to it. वैसे majority crystals तो negativity कोई भी absorb नहीं करता, वो सिर्फ negativity को repel करेगा या transform कर देता है. But wood एक ऐसा crystal form है जो कि negativity को भी सोख लेता है, अपने अंदर ले लेता है. और ऐसे ही cotton है. तो cotton को मतलब आप cotton कहीं use नहीं करना है. कॉटन को अगर पुरानी कॉटन पड़ी है या पुराने गद्दे हैं या पुराना कपड़ा है तो वो आपने डिस्पोज करना. जैसे कि पुराने कपड़े नहीं, हम पूछते हैं somebody who's not alive or somebody who's been very unwell, तो उनके कपड़ों को हम दे देते हैं दान में या फेंक देते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो कॉटन को हम बस क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी अरोमा ऑयल के साथ, और and then just dispose it, or you can burn it with any diya or any camphor or something like that. Can you tell something about this one, because I've got a lot of crystal as a gift. This is a hollet. I can't actually see it properly, but ठीक है. ये तो हाँ, ये इसका प्रॉपर्टीज मैं आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूँ. Okay. Sir, there's a question that post advanced training, will the person be a crystal healer? Yes, after the session, एक मेरी वो स्लाइड में था, आई थिंक वो मेरे पास है शायद, वो स्लाइड हमने शेयर नहीं करी. आफ्टर द सेशन, somebody is on, I think. Yeah, after the session, you can do crystal healing, which means कि उसके बाद आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए या किसी और के लिए क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं विद द यूज ऑफ क्रिस्टल्स. यू आर नॉट बिकमिंग एन एनर्जी हीलर, you are not becoming a healer or a numerologist or an astrologer or any other form of healer. You are becoming a very specific form of healer, which is called crystal healer, which means you can prescribe them certain crystals, not all,
बट सर्टन मेजोरिटी ऑफ द क्रिस्टल्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको हस्बैंड को देना है रोज क्वार्ट्स, आपको पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिव बहुत फीलिंग होता है, ये लो व्हाइट क्वार्ट्स, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आपके अराउंड बहुत नेगेटिविटी है, ब्लैक टॉर्मलिन। और उनको आप लोगों की बॉडी पे यूज कर पाओगे, चक्रास पे यूज कर पाओगे, अपने ऊपर यूज कर पाओगे, अपनी बॉडी पे यूज कर पाओगे। उसमें एक टॉपिक है हाउ टू गिफ्ट क्रिस्टल्स, हाउ टू रिसीव क्रिस्टल्स। मतलब you will be officially incorporate into the crystal world where you can do crystal healing. So yes, उसके बाद आप अपने आप को crystal healer बोल सकते हैं, and with due course of practice you can do it for others also. क्योंकि पहले आपको अपने घर में अपने ऊपर या अपने क्लोज लोगों पे करना पड़ेगा, और क्रिस्टल्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। और जो बेसिक क्रिस्टल का सेट होगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपको वो पहुंच जाए कोरियर से as soon as possible. You know, though the couriers are working from my area, but still थोड़ा सा डिले हो जाता है आजकल, लॉकडाउन तो है ये भी, बट आपको मिल जाएगा वो। So who else is excited and raising hands? I think काफी लोग तो क्या अभी भी रजिस्ट्रेशन करने चले गए क्या? हो गया Sir, registration. Sir, I have registered. Great, ma'am. Sir, one question. Does you- this crystal? Okay. Who's Sorry. talking? I am confused now. Jyoti is Snehal. talking or Snehal? Snehal. Anji. I have one question. Jyoti. Does this? Okay. I'll wait, no problem. No. You speak. It's fine. नहीं, you Okay, continue. Jyoti, you continue. Yes, no problem. We can go पहले one आप- by one, पहले आप right? में गाड़ी New निकल friends जाएगी। बनाने हैं यार क्लास Okay. में। Acha, sir, I wanted to ask, how will this crystal healing therapy be beneficial for me in my Reiki practice? रेकी को प्रैक्टिस को आपके नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आप अभी रेकी कैसे करते हैं? जब आपसे कोई दूर डिस्टेंट हीलिंग कैसे करते हो रेकी में? नहीं, I've just done level 1. मैं self healing कर रही हूँ फिलहाल। सेल्फ हीलिंग कर रहे हो ना? अब आप Yeah, आपके पास I'm going क्रिस्टल, to learn level 2 also very soon. आपके पास कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं अभी? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो अब आप जो बेसिक किट एटलीस्ट अपने लिए ऑर्डर करोगे, Yeah, उसके yeah, अलावा that भी is आप good. वो आप डाल ले सकते दीजिए। हो। Yeah. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग क्रिस्टल रेकी हीलिंग फॉर योरसेल्फ, Okay. अभी आपको सिंबल्स नहीं सिखाए ना, चोकोरे वगैरह? नहीं। अभी आप जब नेक्स्ट अपने लिए हीलिंग कर रहे हो तो आप आंखें बंद करके बैठ रहे हो, अपना चक्रास को वो देख रहे हो, अपने को ऊपर से Right. एनर्जी दे रहे हो, अपनी बॉडी Right. में पूरे में ट्रांसफर कर रहे हो। Right. होल्ड दिस इन योर हैंड। What is that, sir? दिस इज व्हाइट क्वार्ट्ज। Right. Okay. ये मतलब सबसे पहला क्रिस्टल है। अगर दुनिया में आपके पास कोई क्रिस्टल नहीं है और ये क्रिस्टल है तो ये भी काम करे, इनफ है। Okay. हर एक क्रिस्टल चाहिए, बट अगर कोई भी नहीं है तो ये क्रिस्टल से आपका काम चल जाए। Okay. So majority, if you would have seen your teacher, the Reiki Grand Master, तो अगर आपने उसको कभी हीलिंग करते हुए देखा है, अलग अलग सेशन में कभी ध्यान दिया है अगर, तो उनके एक हाथ में ये होता है, या तो इसका बॉल होगा या वैंड होगा। लाइक माय क्रिस्टल गुरु who's the crystal ग्रैंड मास्टर, वो एक हाथ में उनके ये होता है और एक हाथ में वॉन्ड होता है, और वो ऐसे हीलिंग कर रहे होते हैं। So from this hand or here they are receiving the energy and from here they are sending it. So ऐसे ये इसको जनरेट करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, क्रिस्टल लेके अपने हाथ में रखकर अपना मेडिटेशन, अपना रेकी हीलिंग करना है। So it will go one level beyond, because ये जनरेटर है, ये उस एनर्जी को मैग्नीफाई कर रहा है। आपकी एनर्जी इतनी लग रही है, बट ये उसको मैग्नीफाई कर रहा है। जितना बड़ा उतना अच्छा, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो पिरामिड हो, चाहे वो रॉ हो, बट पिरामिड एंड बॉल ज्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। Okay. Thank you. Puneet ji is asking in the chat window, do we need to learn Reiki also to do crystal healing? Puneet, you don't need to learn anything. आप नेक्स्ट लेवल का जो हमारा एडवांस कोर्स है वो करने के बाद से, उसके आखिरी दिन के बाद से आप क्रिस्टल हीलर बन जाएंगे, बट यू डोंट नीड टू बी एनीथिंग एल्स विद इट। आप अकेले भी इनफ। आप उसके साथ जो भी मॉडलिटी ऐड करेंगे वो फायदा है, बट सिर्फ क्रिस्टल हीलर बनने के लिए नो प्रॉब्लम। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस। एक्चुअली मेरे फादर को काफी हेल्थ इश्यूज और एंगर इश्यूज रहते हैं, so I had placed a rose quartz pyramid shape में उनके मंदिर में।
जहाँ वो पूजा करते हैं. And also I had placed one amethyst raw stone in his bedroom, but it's not helping him out. What else can I वो do? इसलिए हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि आपने उनके ऑरा फील्ड में या उनके आसपास या उनकी फेवरेट जगहों पे क्रिस्टल तो रख दिया. ठीक है, पहली बात तो चलो छोटा क्रिस्टल है तो जितना छोटा उतना मैग्नीफाई करेगा. दूसरी बात, उनके चक्रास आर ब्लॉक. अगर आज मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरा सेक्रल चक्रा, मेरा रूट चक्रा, मेरा थ्रोट चक्रा, मेरा हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है. आपके फादर का फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंकिंग ये सारे ब्लॉक्ड है. अगर मेरी तबीयत खराब रहती है तो मेरा रूट चक्रा, मेरा सेक्स चक्रा, सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है या उसमें नेगेटिव एनर्जी है. इवन थ्रोट चक्रा भी उसमें से एक हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है. तो अब वो चक्रास तो एकदम, अगर मैंने ये पहन भी लिया तो भी वो चक्रास इतने ज्यादा क्लीन नहीं होंगे, इतना ज्यादा बैलेंस नहीं होंगे जो कि वो क्रिस्टल हीलिंग के थ्रू होंगे. तो आप या तो उनके ऊपर फिजिकली कर सकते हैं, आप वो फिजिकली नहीं माने अगर, तो फिर उसके बाद उनकी फोटो के थ्रू आप कर सकते हैं, जो कि मतलब दैट इज वन ऑफ द वेज. वो आप थोड़ा और सालों में जब आगे जाके सीखेंगे, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, so you can start doing it by keeping those crystals on his picture also. या आप इवन थ्रू योर माइंड आप कर सकते हैं, जैसे हीलिंग आप आंख बंद करके मेडिटेशन करके इमेजिन करके कर सकते हैं. वो एक्चुअली एक तरीके से उसमें आप उसके लिए आपको रेकी और प्राणिक हीलिंग की नॉलेज होनी चाहिए. अगर वो नहीं भी है नॉलेज तो भी यू कैन स्टिल डू इट. बट हाँ, उसमें रेकी और प्राणिक हीलिंग अगर आप जानते होंगे तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाए. सामने सामने करने के लिए आपको कोई हीलिंग जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने क्रिस्टल्स की हेल्प ली. वो आप मेरे से पूछ लेना, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा. So I think, guys, it's just a humble request. You can always go to this campus feed and you can give the rating, and you can give us rating on the Play Store, and you can also give the feedback on the campus feed after this session. We would love to have that. You can take up Krishna sir's name, and if you really like me too, my name would also help. And भाई निकी को रेटिंग ले देना, फिर उसके बाद मेरे को देना प्लीज. But yeah, it will be nice, yeah, because see, for a healer or for anybody who is doing certain things out of compassion, ना ये चीजें फ्यूल होती हैं. So अगर एक रेटिंग भी अच्छा आ जाता ना, रात को नींद अच्छी आती है भाई, किसी को अच्छा लगा. Exactly, and I have got this wonderful participants, wonderful teacher after a long time. So I'm really very, very, very much happy for this session and the wonderful audience that I was part with. And trust me, I have also learned a lot of things you were not aware, but my dad was also sitting inside and listening to sir. And my dad was like, "Kya sir hai yaar, kya teacher hai?" Like he is like, now I want to get into one-on-one class with sir. My father is sold now here. So Namaste yes. uncle, and thank you. Namaste sir, निकी के पापा मिस्टर गुप्ता, thank you for appreciating. अच्छा लग रहा है मुझे, बड़े दिनों बाद कोई तारीफ सुनने को मिली है, लॉकडाउन में स्पेशली. Exactly, मतलब my dad was like, अरे बिट क्लास पे ये सब भी पढ़ाते हैं क्या, टीचर लाया है. मतलब it was a really nice, and the participants also, the enthusiasm they had, and they were also willing to learn. Yeah, very active, a lot of, yes. As just a heads up, you know, once we do our advanced crystal healing, we will be doing a numerology class also in, you know, somewhere down the line. So स्नेहल ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया है. तो वो भी करेंगे, उसके लिए भी हम लोग आई थिंक एक दिन का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा और उसके बाद एक बेसिक लेवल न्यूमरोलॉजी का क्लास होगा. मतलब why we are trying to, you know, push these science or these occult sciences out in the world is because today, you know, everybody knows what the world is going through. So these sciences are more than required than before. This is like a period of another 8 years whereby occult sciences are going to rule the world. Even the person who never used to believe in God or any of these sciences is now forced, I'm using this word, to, you know, start believing in something, चाहे वो एक पत्थर का टुकड़ा हो. So people who should get into it, of any age, does not matter, चाहे अपने लिए हो, बाहर के लिए, किसी के लिए ना भी करना. So yeah, who's the next light being excited? I was rating. Sir, I want to know, like you were saying about numerology classes. हाँ जी.
So in numerology, you will be going to teach Chinese numerology or a Vedic numerology? नितिन व्हाट्सएप पे पूछना ना, अभी ये क्लास और लोगों को पूछने दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। Okay, sir. वैसे वो चाइनीज वैदिक नहीं होगा, it's going to be a mix of 2-3. Right. Jyoti wanted to ask, na, I think Jyoti. Okay, so one more thing, people who have already registered for masterclass now, kindly have patience, because in another 2 days you're going to have your WhatsApp group, and once you have that, you can start posting. Sir will be there to address you, right? So we'll take up there, right? And if somebody is like not, if somebody who is not registered right now and has any questions, you can take it up right now. That would help them also, right? Yes or no, guys? Yes. Yes, thank you. Jyoti wanted to ask a question. Where is she? Oh, I can't see her. Yes, I just got a message that I am not able to register for the masterclass due to some clash in the schedule, but looking forward, but they had few questions. Okay. Okay, so sir, can the time be 8 p.m. instead of 8:30? Puneet is asking. 8 p.m. better according to. Okay, so once I make the WhatsApp group, I'll post the time as 8 p.m. Let's see what the majority says. If everyone agrees, then it's a heads up from our end. If people are, majority will go on majority. Let's see what happens. But I'm not assuring that we can make it 8:30. Let me tell you guys that keep in mind that अगर मेरी क्लास 8 बजे शुरू हो रही है तो वो 9 बजे खत्म नहीं होने वाली। 1 घंटे की क्लास की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो कोई भी इस वजह से टाइमिंग को चेंज करने का मत सोचो कि भाई 8 बजे कर लेते हैं क्योंकि 9 बजे मेरा सीरियल आता है सास भी बहू थी तो वो मैं देख पाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता। लेट करने का मेरा पर्पस 2 है। एक तो ऑफिस से सब लोग जो भी काम कर रहे हैं आजकल, चाहे वर्क फ्रॉम होम ही हो, ऑफिस से फ्री हो जाता है बंदा और 8:30, 9:30, 10 बजे खाना खा सकते हैं, तो मैं जल्दी इसलिए नहीं करना चाह रहा। So consider that thing in mind that if you think that from 8 to 9 you will be free, that is not going to happen. तो 8:30 से 9:30 के 10 बज जाएंगे, वो शायद कोई accommodate कर पाए, but ये देख लेना। तो accordingly let's keep a time. 8:30 is what I'm still recommending, but we can try to go at 8 or 8:15. Less to be in between for everyone. Okay, so Jyoti is like, I'll have to register. Yeah, Nikki, what were you saying? Yeah, Ritu ma'am has a doubt, sir. She's telling the time is clashing for her. So as I have suggested, like 2-3 people who came to me stating that they won't be available on this particular date. हाँ, तो उसके लिए क्या करना है सर? इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग भी आपको इसकी लाइव क्लास की हर दफा की रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिलेगी एंड यू कैन एक्सेस इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसका पर्पस लाइफ टाइम, तो दैट इज इवन बेटर। ये तो सुपर बोनस मिल गया, लाइफ टाइम आपको मिलेगा। सो दैट इज अ बेनिफिट, बिकॉज कई दफा क्या होता है कि नेट नहीं चल रहा है, आप लोग कहीं बाहर है, कुछ भी हो सकता है, लाइट चली गई है या घर में कोई डिनर पे आ गया, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? सो आपने मिस कर दी या 15 मिनट की मिस कर दी या पूरी मिस कर दी, डजंट मैटर, you can go in the recording and watch it. And the other advantage is you are still in the WhatsApp group. If you have joined the advance, you will be in the advance group. WhatsApp के ग्रुप पे तो आप लोग रहोगे ना, तो आप उस पे कभी भी कोई क्वेश्चन है बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हो, you can talk to me also. Sir's number also will be there. Yeah, sir's number will also be there. When you're watching the recording, if you have any doubt or any practices you wanted, only especially for the people who are willing registered and time clashes, you can always reach out to me. We'll try to help you out the best way we can. Because BitClass works for customer satisfaction. Yes, thank you. So thank you so much, Krishna sir, for the wonderful session. We were really glad to have you at BitClass platform. Thank you so much, all the wonderful audience, for being part of BitClass. And yes, don't worry, if anybody has any doubt, you can always, post it in the WhatsApp group, something that is relevant to the 2 days of session. And if something it is about talking in the masterclass, then kindly hold on. Once you're shifted in another 2-3 days in the new WhatsApp group, we will take up all the Q&A there itself. Okay? Yes. And don't forget to, drop your views on the campus feed and the Play Store.
And I hope everybody remembers Nikki's name and mine. Krishna तो easy है ना, भूलोगे तो नहीं भाई? गर्ल्स को तो पक्का याद है, सारी गर्ल्स को स्माइल कर रही हैं. गायस भी थोड़ा बहुत हाथ हिला रहे हैं, but they are tired, I guess. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Okay, so ठीक है. thank you so much, everyone. Bye. Now we come to Have the a end great- of the session, and I would end the meeting here. Thank you so much. Thanks, Thank Nikki. you. Thanks, Krishna. Thank sir. you. Thank you. Bye. Bye.